Welcome back, ladies and gentlemen. Once again, we are back with the show of Call of Duty Mobile India Invitationals. My name is Reda. Along with me, it's going to be Elevate anytime soon. Well, let me remind you once again, guys, the clash and the contestment is for real. एक बहुत ही बढ़िया कंपटीशन आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है. प्लेऑफ्स का डे नंबर 1 जिस तरीके से निकल के गया, आप देखते हैं डे नंबर 2 किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है. What will happen in this particular day? We have to check out. A lot of clashes are going to be there. A lot of fights are going to be there. Waiting for everything to come in. But at the end of the day, what is the prize pool is something as a bigger question coming up. So before that, guys, we are going to dive into the prize pool. So moving up ahead, yeah, there we go. We have got the prize pool, I believe, in front of your screens. Prize pool is of massive 1 lakh Codm points. Rank 1, or should I say the champion of this particular invitational series is going to get 30,000 CP. रैंक 2 की बात करें शायद 20,000 सीपी से नवाजे जाएंगे. रैंक 3 और रैंक 4 पे यहाँ पे 12,000 सीपी मिलने वाली है. वही अगर बात करें जाए रैंक 5, रैंक 6 एंड रैंक 7 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, इन पे यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं आई बिलीव 6,000 सीपीज एज वेल. तो डेफिनेटली गाइस ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा आई गेस क्रूशियल देखने को मिलने वाली है. और साथ ही साथ एमवीपी को भी यहाँ पे बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा गया. एमवीपी के लिए भी कहने की काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है. दैट इज गोना बी द 2000 सीपी फॉर द एमवीपी एज वेल. तो डेफिनेटली ये सारी चीजें एक बहुत ही अच्छा खासा मैं कहूंगा एनहांसमेंट लाती हुई दिखेंगे इन दिस होल सिनेरियो. लविंग द वे जिस तरीके से पूरा गेम यहाँ पे जाने वाला है. बट apart from everything else, I guess we are going to witness and we are going to check out more and more details. चलिए guys, क्यों ना बात करते हैं brackets की. Let's talk about the brackets as well. As soon as we can get the brackets, well, we are going to talk about that. But before that, yeah, there we go. The brackets are coming in front of our screens. Remember, guys, in the semi-finale, we have Team Top and Vitality, which secured their position from the quarterfinals. As you can see, brackets के according आप already यहाँ पे check out कर सकते हैं कि किस तरीके से इनकी performance निकली थी, क्या उन्होंने अपनी जो एक synergy है उसका result यहाँ पे दिखाया था. उससे पहले जैसा कि हमने बात करी थी गाइस, जो फाइट्स हैं, जो एक अच्छा खासा क्लैश यहाँ पे देखने को मिला था आईएफएम और एसएस वर्क्सा के बारे में, वो भी आपने देखा था 3-1 के स्कोर के साथ निकलते हुए दिखे. वहीं एनएस ऑफिशियल ने लास्ट मैच फोरफिट कर दिया था इन T2 इन्फेक्टिव. उसकी वजह से आपको विनर्स ब्रैकेट के आने या फिर लेट्स से अपर ब्रैकेट के थ्रू आगे बढ़ती हुई दिख रही है. एंड दे आर गोइंग टू फेस ऑफ आईएफएम Esports टुडे. सो देखते हैं किस तरीके से पूरा गेम यहाँ पे निकलता है. टीम टॉप Esports वर्सेस वाइटैलिटी हमारे आज के दिन का पहला मैच होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So definitely it's going to be very crucial to see that how the whole game gets concluded, how the fights are actually going to be there. And apart from that, यहाँ से जो winners निकल के आएंगे, टीम टॉप वर्सेस टीम वाइटैलिटी और टीम आईएफएम Esports वर्सेस टीम इन T2P इन्फेक्टिव के बीच में से जो विनर रहेंगे वो विनर बनेंगे फाइनलिस्ट. सो डेफिनेटली ये भी कहने की काफी ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे रहने वाला है. लो ब्रैकेट की बात करी जाए, वहां पे भी आपको देखने को मिल रही है 4 अमेजिंग टीम्स. वी हैव गॉट रेवेनेंट Esports, वी हैव गॉट गॉडलाइक Esports, वर्क्सा, अपार्ट फ्रॉम दैट एनएस ऑफिशियल. ये 4 टीम्स आपको लोअर ब्रैकेट में देखने को मिल रही है इन राउंड 1. राउंड 2 में जाएंगे फिलहाल जो लूजर रहेंगे सेमीफाइनल्स 2 के, यानी कि जो फिलहाल आई गेस आईएफएम Esports वर्सेस T2P इन्फेक्टिव का जो बैटल रहेगा उसमें से जो लूजर रहेंगे वो यहाँ पे जाएंगे इन द लोअर ब्रैकेट राउंड 2. और साथ ही साथ गॉडलाइक Esports वर्सेस रेवेनेंट के बीच में से जो विनर रहेगा वो फेस ऑफ करेगा लोअर ब्रैकेट राउंड 2 में. तो कुछ इस तरीके से पूरा गेम आगे यहाँ पे निकलने वाला है. एंड लास्टली अगर मैं बात करूं हमारे ग्रैंड फाइनल्स की, तो वहां पे देखिए कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पे जो अपर ब्रैकेट है उसके सेमीफाइनल्स के जो उसके फाइनल्स के जो विनर रहेंगे वो जाएंगे आई गेस इन द फाइनल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसी के अलावा लोअर ब्रैकेट के जो विनर लोअर ब्रैकेट के जो फाइनल्स रहेगा उसके जो विनर है वो आगे बढ़ते हुए दिखेंगे. बट ऑल टुगेदर गाइस, आई गेस वी हैव टू टॉक अबाउट मोर एंड मोर डिटेल्स. लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. If we get the details, we are going to talk about that, I guess, very soon. The match will also start. बहुत जल्द हमारा मैच स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है. So waiting for the match to get started. As soon as the match gets started, we will be pumped up to see what will happen in this day particularly. किस तरीके से गेम यहाँ पे निकलने वाला है. As we all know, best of 5 है. तो पहले चलिए मैं P2 की भी बात कर लेता हूँ फटाफट से मैं यहाँ पे. तो देखिए गाइस, पहला जो मैच रहेगा वो टीम वाइटैलिटी वर्सेस टॉप के बीच में देखने को मिलने वाला है. मैप बैन्स की अगर बात करी जाए तो स्टैंड ऑफ और समिट को अवॉइड यहाँ पे किया गया है. बट रेस्ट अपार्ट इफ टॉक अबाउट गेम नंबर 1, वो देखने को मिलेगा हार्ड पॉइंट का हासिंदा के मैप के अंदर. टॉप रहेगी रेड कॉर्नर में, ब्लू कॉर्नर में रहेगी वाइटैलिटी. दिस इज हाउ द गेम इज गोना गेट कॉन्वोलेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग दैट इज गोना बी इंपॉर्टेंट इज गोना बी गेम नंबर 2. तो गेम नंबर 2 की अगर बात करी जाए, वहां पे देखने को मिलेगी सर्च एंड डिस्ट्रॉय का मोड और स्लम्स का मैप देखने को मिलेगा. टॉप रहेगी ब्लू कॉर्नर में, वाइटैलिटी रहेगी रेड कॉर्नर में. गेम नंबर 3 की बात करी जाए, कंट्रोल इन द फायरिंग रेंज. टॉप रहेगी रेड कॉर्नर में, वाइटैलिटी रहेगी ब्लू कॉर्नर में. ये नंबर 4 की बात करी जाए तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा हार्ड पॉइंट का रेड. ओह इंटरेस्टिंग, एक अच्छा कॉम्बिनेशन गाइस, एक डेडली कॉम्बिनेशन टू बी ऑनेस्ट. तो डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या रिजल्ट निकल के आती है वो मैं जरूर से देखना चाहूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करी जाए गेम नंबर 5 की, वो रहेगा सर्च एंड डिस्ट्रॉय टेक ऑफ
एंड टॉप रहेगी रेड कॉर्नर में, वाइटलिटी रहेगी ब्लू कॉर्नर में। तो कोई खास स्वाइप्स यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहा है फिलहाल। शुरुआत में 2-3 मैचेस में हमें यहाँ पे स्वाइप जरूर देखने को मिले, बट रेस्ट अपार्ट अभी ऐसा कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बट मूविंग अपार्ट, वी आर वेटिंग फॉर द top esports to bring back their player in the lobby, and once again, once the players are here, we are going to witness a lot of things, a lot of clash, a lot of aggression as well. ऑपरेटर्स बैन की अगर बात करी जाए, स्पैरो और एनालिटर को यहाँ पे बैन किया गया। दोनों ही गन्स जो कि मुझे थोड़ी डिसेंट लगती हैं, अच्छी लगती है, पसंद है, वो बैंड है। ग्रेविटी, वोटेक्स गन, प्यूरीफायर, वो सारी गन्स आपको यूज होती हुई दिख सकती हैं, क्लॉ यूज होती हुई दिख सकती है। सो डेफिनेटली देखना चाहूंगा कौन कौन सी गन्स को प्लेयर्स यहाँ पे यूज करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ऑल दो अगर हम बात करें राउंड स्कोर लिमिट की, वो रहेगी 250 यानी कि 250। टाइम लिमिट की बात करी जाए ऑल टुगेदर, तो वो रहेगा 600 सेकंड्स का। यानी कि डिसेंटली मैं कहूंगा हर एक चीज यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से कैलकुलेट करी गई है। बट लेट्स सी हु आर द गिव अवेज विनर। एंड गाइस, आपको को एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, दैट वी हैव अ गिव अवे गोइंग ऑन, एंड द गिव अवे इज ऑफ बेसिकली 15 winners are going to be there. These winners can choose between legendary Lapa या फिर King's Pride gun skin और Messi character bundle. So these are the giveaways, kind of let's say retail. Instagram पे 5 giveaway होगा, YouTube पे 5 giveaway होगा, Discord पे 5 लोगों का giveaway यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। For Instagram, you have to go ahead on the Instagram page, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रहा है। You have to follow us on that Instagram page and like the post. Apart from that, उस पोस्ट को आपको अपनी स्टोरी पे शेयर करना है और वहां पे अपने किसी 3 दोस्तों को टैग भी करना है। और उसी के साथ साथ बस आपका काम खत्म हो जाएगा फॉर इंस्टाग्राम गिव अवे। वहां पे आप जाएंगे और उसके बाद आपको 5 विनर्स जो है वो डेली चूज होकर यहाँ पे दिखते रहेंगे ऑन द स्ट्रीम। एंड टुडेज गिव अवे विनर, टू बी ऑनेस्ट, playoffs day number 1 giveaway winner will be showcased to you very soon. But before the match actually gets started, we have to check out one more detail, that is going to be that what will happen in the YouTube giveaway. Well, while talking about that, YouTube giveaway के लिए आपको क्या करना है गाइस, Codm India Invitational Playoffs नवंबर 4 से नवंबर 27 तक का जो पूरा का पूरा जो एक एंगेजमेंट है वो देखना है। फिलहाल वहाँ पे एक्टिवली आपको एंगेज करना है, ऑडियंस बन के आपको जल्दी जल्दी चैट करना है, बातचीत करनी है, हम लोगों से बताना है व्हाट यू थिंक अबाउट द होल सिचुएशन एंड स्टफ लाइक दैट एज वेल। तो ये सारी चीजों पे आप लोग बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे विनर्स ऑफ टी नंबर 1। वेल, इंस्टाग्राम के जो विनर है वो रहेंगे @IG.ml, एंड यूट्यूब के जो गिव अवे विनर है टी नंबर 1 के, वो रहेंगे bot010। तो गाइस, these are the winners, these are the one who are easily going to choose between Messi character bundle और legendary Lapa King's Pride गन स्किन। तो वो लोग चूज कर सकते हैं गाइस अपने अकॉर्डिंगली, उनको क्या चाहिए। फिलहाल मूविंग बैक टू द कास्ट टुडे, वेटिंग फॉर द मैच, waiting for the carnage, waiting for the clash to actually get started, but still we are waiting because the match has not yet started. Once the match gets started, we'll get to know what will happen, how it will happen, how the compromisation, how the fights are going to be there. From top esports, it's Joy, Pepe, Pikachu, Zoon. But the fifth one is missing right now, and the missing key has to be here once again. And apart from that, when it comes to Vitality, we have got Jokers, Argon, Sams, Eraser, and Random. Vitality, कल के दिन कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस देखी गई थी। वाइटलिटी वर्सेस गॉडलाइक का बैटल हमें देखने को मिला था। वाइटलिटी ने लास्ट में आपने देखा गया क्या कर गए वो 7-0 का स्कोर देखने को मिला था। और टॉप की बात करी जाए तो देखिए, टॉप को तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, बिकॉज टॉप की तरफ से ऑनेस्टली जो कंपटीशन था बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम देखने को मिला। एंड टॉप स्पोर्ट्स, द वे दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेवेनेंट वाज एब्सोल्युटली लवली। पहला मैच था वो कल के दिन का, प्लेऑफ्स डे नंबर 1 का, and everything was actually there. Every energy that we wanted to actually have was actually there. So yeah, definitely I guess today's day is going to be much more crucial for these guys. Playoffs का डे नंबर 2 देखने को मिलने वाला है। रेडी हैं ये सारे के सारे प्लेयर्स? क्या आप लोग रेडी हैं? यही कमेंट डाउन करके जरूर से मुझे आप बता दीजिएगा। जितने भी लोग स्ट्रीम पे हमारे साथ बने हुए, प्लीज गो फॉर इट एंड मेक इट अमेजिंग गाइस, मेक द स्ट्रीम अमेजिंग। डोंट हेट एनीवन, सपोर्ट एवरीवन। जो भी आपकी फेवरेट टीम है उसको भी सपोर्ट करिए, जो भी आपकी फेवरेट टीम नहीं है उनके बारे में भी क्रिटिसिज्म करिए। देखिए, कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा प्लीज, एंड इट विल बी वेरी हेक्टिक टू बी ऑनेस्ट इफ द थिंग्स गो डाउन इन द कास्ट डेक एंड एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे राउंड स्कोर लिमिट की, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया था गाइस, 250 राउंड स्कोर लिमिट है। टाइम लिमिट 600 सेकंड्स की देखने को मिलेगी। डेफिनेटली काफी ज्यादा टफ हो जाने वाला है यहाँ पे जो कंपटीशन है। डेफिनेटली इट विल बी क्वाइट लेंथी, क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दीज गाइस टू एक्चुअली डील विद। बट अभी टॉप स्पोर्ट्स के जो हमारे चौथे खिलाड़ी हैं वो भी आ चुके हैं। 5वें खिलाड़ी की मिसिंग यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो डाली जाएगी। जैसे जैसे वो यहाँ पे गेम के अंदर आएंगे वैसे हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा, एंड आई होप सो वो जल्दी जल्दी आ जाए, बिकॉज इट्स गेटिंग लिटिल बिट मोर स्ट्रेची। आई बिलीव आप लोग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, बट डोंट वरी गाइस, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, गिव अवे चल रहा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी। तो कमेंट करते रहिए फटाफट से। यूट्यूब के जो गिव अवे विनर कल के दिन के थे वो है bot010, bot.010। तो ये है फिलहाल हमारे कल के यूट्यूब गिव अवे विनर। और आज के जो हमारे फिलहाल गिव अवे विनर हो सकते हैं
वो कौन होंगे? वो आप ही लोगों के बीच में से कोई ना कोई होने वाला है फ्रॉम यूट्यूब। एंड अगर इंस्टाग्राम की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम के बारे में आपको डिटेल दिया, दैट गो हेड, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए, सीओडी मोबाइल इंडिया को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उस पोस्ट को लाइक करिए जो गिव अवे पोस्ट है। साथ ही साथ उस पोस्ट को शेयर करिए अपने स्टोरी में, और शेयर करने के साथ ही अपने 3 दोस्तों को टैग करिए। एंड लीव रेस्ट टू योर लक, टू बी ऑनेस्टली। अगर आप लकी होगे तो फिलहाल आपको गिव अवे मिल जाएगा, आप इजीली उस गिव अवे को चेरिश कर पाओगे। एंड नहीं भी होगे तो गाइस और भी जगह गिव अवे चल रहे हैं, यूट्यूब पे गिव अवे चल रहे हैं, यहाँ पे आप आइए, बातचीत करिए, एक्टिवली एंगेज करिए। एंड वही डिस्कॉर्ड की बात करी जाए तो फॉर दैट यू हैव टू जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर फ्रॉम फॉर मोर इन्फो। 5 विनर्स विल बी चूजन फ्रॉम डिस्कॉर्ड, ये भी ध्यान रखिए फिलहाल गाइस। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं क्या गाइस, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जो गिव अवे विनर्स है वो अनाउंस होगा डेली। जैसे आज हमने कल के गिव अवे विनर को अनाउंस किया है, ऐसे ही कल के गिव अवे विनर को, यानी कि आज के गिव अवे विनर को हम शायद या तो आज के एंड में या फिर कल आपको अनाउंस करते दिख जाएंगे बाय द स्टार्ट ऑफ द मैच। सो या these are the few things that has to be carried away. Apart from that, guys, once again, let's talk about the stakes, the prize pool. The prize pool is absolutely amazing. But before that, I guess the match has been started. So let's directly dive into the match. Particularly, this is actually going to be a very tough match for team from Top Esports, because Top Esports is here with the 4-man power. I don't see that how they're going to get this match in their favor, because Vitality कल Godlike को जिस तरीके से beat out करके गई थी, लग रहा है कि फिलहाल आज Vitality की तरफ से फिर से वैसा ही कुछ प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है. There is a possibility that Vitality might be able to turn the tides in their favor. Top Esports अपनी 4-man power के साथ ही आगे बढ़ती हुई दिखेगी, as you all can see. Apart from that, guys, yes, of course, there is a 3rd anniversary giveaway going on. Go for it, guys. Make sure to actually use as much as of your credible skills as possible. But now moving up, let's dive into the game. The game has already been started. It's going to be a very clashy or very, should I say, amazing game. It is starting off in the hard point. पहला हार्ड पॉइंट देखते हैं कौन कवर करता है यहाँ पे. जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ड पॉइंट कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी. स्पेस आते हुए देखिए, रैंडम को पिकआउट यहाँ पे कर दिया जाएगा. दैट्स इंटरेस्टिंग. वाइटैलिटी के खिलाड़ियों को धीरे धीरे करके यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जा रहा है. एक अच्छा खासा प्रेशर उनके ऊपर यहाँ पे बनता हुआ दिखेंगे. ऑनेस्टली ये जो प्रेशर है वो वाइटैलिटी के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ सकता है, बट वाइटैलिटी हार्ड पॉइंट को होल्ड करने में काफी सक्षम अभी के लिए देखने को मिल रही है. अनफॉर्चुनेटली दे आर हैविंग द हार्ड पॉइंट इन देयर फेवर, बट कितनी देर तक रख पाएंगे वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ पाता है. देखिए 30 सेकंड्स हमारे पास और बचे हैं. टॉप के जूम को डाउन किया गया है, एपी को भी डाउन किया, लेकिन जॉय की तरफ से साम्स को रिटायर यहाँ पे किया जाएगा. उसके अलावा जोकोस का एक अच्छा अटैक, एक अच्छा स्प्रे, एक अच्छा अटैकिंग फॉर्मेशन निकल के आ रही है. वाइटैलिटी लगातार अपनी लीड के लिए आगे बढ़ रही है. उनको बीट कर पाना इस समय काफी मुश्किल हो जा रहा है. वाइटैलिटी के लिए जो चेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय. वाइटैलिटी के पास एक बहुत अच्छा मौका है बेस्ट ऑफ 5 में से पहला मैच अपने नाम करने का. क्या पता अगले मैच में टॉप ई-स्पोर्ट्स के जो आखिरी खिलाड़ी है वो वापस आ जाए. एंड इफ दैट हैपेंस, टॉप ई-स्पोर्ट्स आपको दोबारा अपने 110% पे देखने को मिल जाए. एंड अगर ये सब चीजें होती है तो गाइस देखिए चिंता वाली बात रहेगी वाइटैलिटी की. ये चीज मैं ऑनेस्टली कह दूं, वाइटैलिटी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा फिर वो मैच जीत पाना. बट अभी के लिए अगला हार्ड पॉइंट कैप्साइज करने की पूरी कोशिश रहेगी वाइटैलिटी की तरफ से. आप देख सकते हैं ऑलरेडी उन्होंने गए हैं, अगले हार्ड पॉइंट को होल्ड करने की कोशिश करी है, और वो शायद इस चीज में सक्सेसफुल भी देखने को मिल जाएंगे. बिकॉज राइट नाउ द वे दे आर कंटेस्टिंग, द वे दे आर पुटिंग अप देयर फाइट इज एब्सोल्युटली लुकिंग स्ट्रांग. एक अच्छा कंटेनमेंट, एक अच्छी फाइट हमें जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है. बट लेट्स सी हाउ द गेम इज गोना गो ऑन. गाइस आप जानते हैं गिव अवे चल रहा है, लाइव चैट पे भी आपके लिए बार बार स्पैम हो रहा है. तो गाइस जाइए फटाफट से, 15 लेजेंडरी लापा एंड मेसी कैरेक्टर गिव अवे हो रहा है. तो जाइए गाइस, गो फॉर इट, एंजॉय द गिव अवे. But meanwhile, when it comes to the game, Vitality is winning it. Vitality is doing the job. Vitality 6 पॉइंट के साथ आगे बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से गेम को आगे बढ़ा रही है. कई लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि मैच को बढ़ाइए आगे, ये वो. गाइस देखो मैच बढ़ेगा, हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी. मैच स्टार्ट में थोड़ा सा डिले हुआ. देयर वाज अ स्मॉल मैन्यूट डिले आई बिलीव इन द स्टार्टिंग ऑफ द मैच, बिकॉज टॉप ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ज्वाइन नहीं कर पाए थे. देखिए आप लोग की खुशी के लिए हमने मैच तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन टॉप ई-स्पोर्ट्स इस चीज से खुश नहीं होगी, बिकॉज आप देख सकते हैं उनके पास मैन पावर नहीं है. टॉप ई-स्पोर्ट्स सिर्फ अपने 4 खिलाड़ियों के साथ जीवित देखने को मिल रही है इस समय, लेकिन टॉप ई-स्पोर्ट्स को मौका दिया जा रहा है. द थिंग इज, मौका कब दिया जा रहा है? अभी जब उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं आई गेस हार्ड पॉइंट का जो टाइम पीरियड है वो रन आउट हो रहा है, तब उनको वाइटैलिटी मौका दे रही है. बिकॉज वाइटैलिटी इज फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट हार्ड पॉइंट. वाइटैलिटी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी काफी ब्रिलियंट निकल के आ रही है कि वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, फटाफट से अगले हार्ड पॉइंट को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं. दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे निकल के आती हुई दिखी कि दिस इज व्हाट वी कॉल द राइट कॉल कमिंग फ्रॉम द कॉर्नर. सही ढंग से कहने के पॉइंट उठाने की कोशिश करते हुए देखेंगे. बट ऑन द अदर कॉर्नर लेट्स सी हाउ द क्लैश इज गोना गेट वर्चुअलाइज्ड. यहाँ पे जोकोस की बात करें, उनके पास देखने को मिल रही है क्लॉ, द गन दैट वी फियर द मोस्ट. आई बिलीव क्लॉ यहाँ पे देखने को मिल रही है, अटैक करने की पूरी कोशिश. हालांकि यहाँ पे बुलेट्स ज्यादा बचे नहीं है, 27 बुलेट्स मोर टू गो. ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू स्प्रे डाउन एंड इवेंचुअली मेक हिज वे आउट. स्टन यहाँ पे कर दिया गया था, फ्लैश यहाँ पे कर दिया, एंड उसकी वजह से देखिए जूम की दिक्कत यहाँ पे जरूर देखने को मिली. टपी की बात करी जाए, तभी यहाँ पे देखिए क्लोज क्वार्टर में फाइट लेती हुई दिखेंगे. एक स्लाइड शॉट यहाँ पे देखने को मिला, दैट वाज गुड इनफ.
अभी भी हार्ड पॉइंट होल्ड करने में नाकामयाब हासिल हो रही है टीम टॉप स्पोर्ट्स को। वहीं वाइटलिटी की बात करी जाए, वाइटलिटी आर राइजिंग एंड दे आर राइजिंग वेरी गुड। लगातार वो कहीं ना कहीं आगे अपने पॉइंट्स को इकट्ठा करते जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज है ऑनेस्टली। वाइटलिटी की तरफ से जो चेज है ना गाइस, अगर शुरुआत में उन्होंने वो बना ली तो फिलहाल वो प्रेशर दुगना हो जाएगा ऑन द टीम नोन एज टॉप स्पोर्ट्स। और देखिए टॉप के लिए ऑलरेडी दिक्कत बढ़ रही है। ऑन दी द कॉर्नर, अगला हार्ड पॉइंट फिर से वाइटलिटी अपने नाम करती हुई दिखेगी। 125 पॉइंट्स के आसपास का जो एरिया है वाइटलिटी अपने नाम कर चुकी है। रैंडम इज बीइंग वेरी क्योटिक, वो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और पॉइंट्स निकालते जा रहे हैं बार बार। लिटरली एक अच्छे खासे टफ स्पॉट में रख दिया गया है टीम टॉप स्पोर्ट्स को, उनके लिए बाउंस बैक कर पाना बहुत मुश्किल। जोन स्पॉट हुए, टेक डाउन हुए यहाँ पे इंडिया कोर्ट का पहल का मस्ता दिखा, बट आर्गन को भी टेक डाउन किया जाएगा। जोई की तरफ से चेंज, इट इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू स्कूप इन द फाइट। हो लेकिन लीजिए क्लॉ लेके बैठे यहाँ पे जून। क्लॉ इनकी जो है वो काफी खतरनाक हो सकती है। जून देखते हैं क्या सिचुएशन बना पाते हैं, लेकिन लीजिए जोय को भी यहाँ पे अभी टेक डाउन किया जाएगा। हर तरफ कहीं ना कहीं कुछ टेक डाउन देखने को मिल रहा है। 140 पॉइंट्स, बट वंस अगेन हार्ड पॉइंट इज इन द फेवर ऑफ वाइटलिटी। सुपीरियर मैन पावर इज एब्सोल्युटली हेल्पिंग देम लॉट। बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा मैन पावर को हेल्प करती हुई दिख रही है। क्या बात, मानना पड़ेगा इस समय ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ दे विल गिव अस द गिव अवे। गिव अवे के लिए गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे डली हुई है। यूट्यूब पे आपको सिर्फ यहाँ पे काफी एक्टिवली एंगेज करना है, चैट में आप लोगों को बातचीत करना है, आपको एक्टिवली यहाँ पे रहना है, दैट्स ऑल। वहीं अगर वाईटी की बात करें, सॉरी इंस्टाग्राम की बात करी जाए, इंस्टाग्राम के लिए आपको जाना है कॉड मोबाइल इंडिया का जो एक पेज है इंस्टाग्राम हैंडल पे, वो जाके फॉलो करना है। वहाँ पे गिव अवे पोस्ट को लाइक करना है और साथ ही साथ उस पोस्ट को अपनी स्टोरी पे शेयर करना है और अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करना है। मतलब इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा सा तामझाम जरूर से है, लेकिन गाइज आप लोग यहाँ पे जरूर करिए, बिकॉज जो गिफ्ट है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है आप लोग के लिए। लेजेंडरी लापा स्किन या फिर मेसी बंडल जो है वो आप देखने को मिलने वाला है। सो डेफिनेटली गाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली हियर फॉर यू गाइज टू एक्चुअली चेरिश। जाइए, गो फॉर इट। 150 पॉइंट्स, 169 पॉइंट्स यहाँ पे देखिए फिलहाल धीरे धीरे करके पॉइंट्स का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है। इस समय टीम वाइटलिटी एक अच्छे खासे लीड पे देखने को मिल रहा है। और मजे की बात यह है टॉप स्पोर्ट्स तो बिल्कुल करीब ही नहीं है इस समय। टॉप स्पोर्ट्स इतना पीछे कैसे हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैन पावर। टॉप स्पोर्ट्स के पास वो मैन पावर नहीं है, वो एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ही शटडाउन उनको कर दिया जा रहा है। तुरंत ही constantly they are getting shut down by the team known as Vitality. Argon pushes forward, fails to connect the shots. Pikachu is the one who is going to cherish all the things, but there we go. Look at that. Look at the smooth spray of this particular guy coming up. 175 points for Team Vitality. They are already leading with a huge buffer. Honestly, अगर बफर की बात करी जाए 159 पॉइंट के साथ, 150 पॉइंट के साथ, 154 प्लस पॉइंट के साथ यहाँ पे जो लीड है वो अपना ये पर्टिकुलर टीम निकालती हुई दिखेगी, जिनका नाम है वाइटलिटी। व्हाट अ लीड मैन, व्हाट अ लीड इंडीड। काफी अच्छी लीड यहाँ पे देखने को मिल रही है। टॉप इज ऑल्सो गुड टीम, नो डाउट इन दैट गाइस। टॉप यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छी खासी टीम है, नो डाउट इन दैट। उनकी परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी रेवेनेंट के सामने देखी। रेवेनेंट को लोअर ब्रैकेट में जाना पड़ा जस्ट बिकॉज जो हमारी टॉप स्पोर्ट्स उनका ये परफॉर्मेंस निकल के आया है। बट देयर वी गो, स्पॉट्स वन टेक्स वन डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेल देयर वी गो, अनदर कंटेस्टेंट इज कमिंग अप। 194 पॉइंट्स फॉर टीम वाइटलिटी। ओह फाइनली हार्ड पॉइंट। मुझे लगा था कि फॉर अ सेकंड यहाँ पे कहीं के फेवर में चला जाएगा टू दी अदर टीम, और तुरंत ही गेम को चेंज किया गया, तुरंत ही परफॉर्मेंस को यहाँ पे इंगेज यहाँ पे किया गया। और आप देख सकते हैं फिलहाल बहुत ही बढ़िया फिर गेम यहाँ पे निकालते हुए दिख रहे हैं प्लेयर्स वाइटलिटी की। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ, जोकोस, आर्गन, हर एक प्लेयर अपने आप में एक अच्छा खासा एग्रेशन दर्शा रहा है। 200 पॉइंट्स यहाँ पे निकाल चुकी है टीम। 31 पॉइंट के साथ टॉप यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मैन पावर की वो कमी इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। वो मैन पावर अगर होता तो फिलहाल शायद ये पूरे गेम को पलट सकते थे, बट ऑनेस्टली मैन इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, इट्स नॉट लुकिंग दैट फीजिबल फॉर देम एज ऑफ नाउ। आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है इनके लिए पूरा स्टैंड। सर्वाइवल पे सवाल उठ चुके हैं, बचना है या फिर नहीं बचना है वो देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। टॉप के जून अगले हार्ड पॉइंट को कवर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? गेट कीप कर रहे हैं इस समय फिलहाल। खुद हार्ड पॉइंट को कवर करने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि वाइटलिटी हार्ड पॉइंट में कवर कर पाए, बिकॉज वाइटलिटी को अगर अब मौका मिल गया तो फिर वहां से वापसी का कोई चांस ही नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपन। Alright, space still coming up, Zoom still comes up, connects the shots. That's an interesting one. What an amazing gun game coming up. बहुत ही अच्छे खासे shots यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। अब देख सकते हैं ऑलरेडी काफी अच्छा खासा कार्नेज यहाँ पे फोरकास्ट होता हुआ दिखेगा। स्पॉट किया फिर से स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 220 के बाद आपको जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। पॉइंट सिस्टम भी काफी डिसेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसमें। आप ही वाइटलिटी के लिए 31 पॉइंट्स का यहाँ पे जो एक आंकड़ा है वो टच करना है। भाई अगर बात करी जाए टॉप स्पोर्ट्स की, तो दे आर स्लोली बट स्टेडली कैचिंग अप टू द गेम और कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और भी टूर्नामेंट्स को अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं गाइस, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया और नॉर्डविन दोनों के आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। वहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। रिमेंबर गाइस, दिस इज कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया Invitationals powered by Activision. A beautiful tournament, a beautiful indeed series coming up for you guys. 2 दिन इसके और यहाँ पे बचे हुए हैं guys, and both of those 2 days are going to be very amazing.
अगर इसको भी इंक्लूड कर लो तो कीमत मच है, क्योंकि अभी से शुरुआत ही हुई है, बहुत ज़्यादा आगे निकली नहीं है, पहला ही मैच आपको देखने को मिला है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट मैच। तो डेफिनेटली गाइस टॉप ई स्पोर्ट्स के लिए दिक्कत भरी बात यहाँ पे रहने वाली है। अगले मैच में अगर टॉप ई स्पोर्ट्स के पास मैन पावर आ जाता है, दे आर बैक अगेन हियर इन द लॉबी विद द मैन पावर, विद दिस एनर्जी, विद द राइट कॉल, आई बिलीव सर्च एंड डिस्ट्रॉय एक अच्छा खासा कमबैक भरा मैच देखने को मिल सकता है, बट लेकिन ना फिलहाल अभी ऐसा कुछ होगा। 240 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ चुके हैं, 10-12 पॉइंट और यहाँ पे इनको इकट्ठे करने मुश्किल से। दैट कुड बी इट, लुक एट दैट गाइस, 5 पॉइंट्स मोर टू गो, जस्ट 5 मोर। ग्रेविटी वोटिंग का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं आर्गन, कोई भी सामने से यहाँ पे आ नहीं पा रहा, बट विद दिस द मैच इज ओवर। As you can see, the scorecard is in front of you guys. आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गेम पलट दिया गया है, परफॉर्मेंस को चेंज कर दिया गया है, एंड विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट या द परफॉर्मेंस या द कार्नेज वाज एब्सोल्युटली ऑप्टिमम। एक शानदार गन गेम के साथ, एक जानदार परफॉर्मेंस के साथ, स्कोर आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3863 का स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम सैम्स कॉर्नर, व्हिच वाज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग जॉब डन एंड डस्टेड, नॉट ऑन दैट, एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। मूविंग अप अहेड, लेट्स गो टू द कास्टेड डेक एंड विल talk about this particular match as well. As you saw, the guys, 250 is the score that Vitali touched. But right now, we are waiting what top is going to do, how top is going to perform, how they're going to capsize this particular performance. It all depends on top right now, because if top are unable to perform in this particular matchup as well, बेस्ट ऑफ 5 का जो पूरा सिचुएशन है उनके लिए काफी भारी हो जाएगा। बट जहां तक मुझे लग रहा है, अभी देखिए एक अच्छा एग्रेशन यहाँ पे जरूर से दिखाया था वाइटलिटी ने। सच एंड डिस्ट्रॉय की अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, वहां पे भी चीजें चेंज होती दिख सकती हैं। सच एंड डिस्ट्रॉय में भी कुछ यहाँ पे अलग डिफरेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो येस, ऑफ कोर्स, waiting for all of those stuff to come in, देखते हैं क्या सिचुएशन निकलती है। once the match gets started, we are easily going to move into the next match। बहुत ही जल्द हमारा जो अगला मैच है वो स्टार्ट होता है, वो दिख जाएगा फिलहाल। तो जल्दी जल्दी मैच स्टार्ट होगा, जल्दी जल्दी फाइट्स देखने को मिलेगी, और आप लोग अपने प्रेडिक्शंस जो है वो भी जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या लगता है अगले मैच में क्या सिचुएशन रहेगी। टॉप स्पोर्ट्स क्या अपनी मैन पावर को दिखा पाएगी, क्या टॉप स्पोर्ट्स अपने फाइट्स को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर पाएगी या फिर नहीं। जस्ट लेट अस नो गाइस, सो दैट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दैट एज वेल। राइट नाउ आई डोंट थिंक सो, सीम्स लाइक दैट डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा यहाँ पे होने वाली हैं टॉप स्पोर्ट्स को, बिकॉज अभी तक टॉप के जो आखिरी खिलाड़ी हैं वो हमें देखने को नहीं मिल पाए। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट पर्सपेक्टिव टू कम इन। Well guys, as you all can see, the match is about to start anytime soon। जैसे ही मैच यहाँ पे स्टार्ट होगा हम लोग इस चीज पे बात करेंगे, बट अभी के लिए अगर हम बात करें ऑनेस्टली, फिलहाल हमारा जो राउंड विन लिमिट है वो देखने को मिल रहा है आपको 7, और उसके अलावा राउंड टाइम लिमिट पर टाइम 120 सेकंड्स यानी कि 2 मिनट का देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्द हमारा जो मैच है वो एक एग्रेसिव मोड पे जाता हुआ दिखेगा। सो लेट्स सी किस तरीके से गेम पूरा निकल के आ पाता है, लेट्स सी किस तरीके से फाइट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश होंगी। बट राइट नाउ वी कैन डू इज जस्ट वेट एंड वॉच हाउ द कार्नेज इज गोइंग टू फोकस। सो गाइस, इंतजार करिए। Alrighty, guys. So the moment we were waiting for, that is the match. I guess the match has been started. As you can see already, the match and the bang is actually coming up. जैसे कि आप देख सकते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस जिसका हमें वेट था, जिसका हमें इंतजार था, वो ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। प्लेयर्स की अगर बात करी जाए, टॉप स्पोर्ट्स के जो चौथे खिलाड़ी हैं वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कनेक्ट नहीं हुए हैं अभी। फ्रॉम टॉप स्पोर्ट्स इज जॉय, पिकाचू, जून। From Vitality it's going to be Jokos, Argon, Sams and उसके अलावा रेजर देखने को मिलेंगे, साथ ही रैंडम है। And remember guys, there is a giveaway going on। जाइए फटाफट से चेकआउट करिए गिवअवे डिटेल्स, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, और मैंने भी आपको सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे बता ही दी है। सो या, these are the few things you have to be carried careful about, to be precise। But moving up ahead, let's go ahead and check out the match, how the match is going to go on, how the fights are going to get concluded and convoluted, to be honest। But what do you think guys? What's your prediction? Is it going to be Vitality moving up to the moving up to the finals, or is it going to be teams like Top Esports moving up ahead? Top Esports फिर से मैन पावर के अभाव के साथ देखने को मिल रही है। रिमेंबर गाइस, यहाँ पे मैन पावर सर्च एंड डिस्ट्रॉय में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। बट वाइटलिटी के भी 2 खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा। वाइटलिटी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिकाचू की अगर बात करी जाए, उनके साथ साथ जोए देखने को मिलेंगे। बोथ ऑफ देम आर गेटिंग कनेक्टेड, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग पनिश्ड एट दिस मोमेंट। टॉप के सिर्फ 4 प्लेयर ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा सेटबैक रहेगा उनके लिए। लुक एट दैट, द बॉम्ब हैज ऑलरेडी बीन प्लांटेड, इट इज सक्सेसफुल इन इट, and Joy comes up with some good DLQ, but the nade is coming up. This nade can be quite credible। Oh, the nade gets bounce off, nade लगा नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ। बट इसी के अलावा अगर मैं बात करूं पिकाचू और जॉय की, देखते हैं वो क्या करते हैं। फिलहाल पिकाचू क्या बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाएंगे? इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट्स अ टफ वन, नॉट ऑन दैट।
Apart from that, from the backcourt, look at that, more and more people are just trying to push forward. देखते हैं किस तरीके से गेम इनका आगे कंक्लूड होता है. लग नहीं रहा कि फिलहाल यहाँ पे जो हार्ड पॉइंट है उसके बाद जो सचिन डिस्ट्रॉय है उसमें कमबैक दे पाएंगे. बट बॉम्ब डिफ्यूज करने गए तो हैं, लेकिन शॉट लिया जाएगा. A double kill coming from Eraser's corner. This is how Eraser is going to erase anybody standing in front of him. Amazing one, no doubt in that. क्या बात है, मानना पड़ेगा. Beautiful performance indeed coming from Eraser's corner. Again, some frags have been coined, some nades, some flashbangs. Everything has been used up. People are actually going to go with the full potential. Oh, shot! Okay, that was B1 by B15. Interesting. Vitality right now at this moment is getting quite a shabby attack in front of them. Look at that. I don't think so. Vitality will be able to survive with this one. I guess this could be it. Yeah, one more. The score is here. Defenders are actually coming back once again. Top Esports bouncing back. Interesting one, no doubt in that. I guess we waited a lot for the match to get started. तो guys आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फालतू का हेटरेट मत दीजिए. जो भी लोग यहाँ पे स्ट्रीम पे प्रेजेंट है गाइस, अपना जो बेस्ट है सपोर्ट को यहाँ पे दीजिए आप लोग. और आपको बताना चाहूँगा गाइस, कई बार होता है प्लेयर्स की कुछ इशू रहता है, टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है, प्लेयर्स आर एबल टू जॉइन. So guys, don't be frantic about it, don't be aggressive about it. Just actually, we hope you guys will support all of these instances because हो जाता है कभी कभी सबका टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं. बट आर्गन की चलिए गेम में बात करते हैं. तो फिलहाल आर्गन देख सकते हैं आप इजीली बहुत ही बढ़िया फाइट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाली है. आर्गन की तरफ से स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए, वो बॉम्ब प्लांट कर चुके थे और उसी के साथ पूरा टेक डाउन देखने को मिला. गोरिल्ला स्क्वाड वंस अगेन कम्स अप विद द 2 points in their favor. Target is of 7. 2 from the team known as Vitality, 1 from the team known as Top Esports. Top Esports is already suffering a lot from the first match. You already saw that the pressure was immense. Honestly, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेशर की, पिछले मैच में बहुत ज्यादा था. इस मैच में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है because इस मैच में भी लग नहीं रहा. Oh, look at that shot, Pepe! What an amazing shot coming from his corner. This guy is absolutely brutal on its own, but a beautiful nade from Eraser's corner managed to wipe him out from the heat from the particular matchup. And now it's a 2v2. It's between Eraser and Jogos. Can Eraser once again come up with a 1v2? You have to check it out. Eraser has to go ahead and plant the bomb as well. But definitely a lot of troublesome situation is going to be there from Eraser's corner. Shots are being delivered. Look at that. Zune on the other corner also receives a lot of shot. Oh, finally, is it Eraser taken down? Yes, of course, it's Eraser taken down. And now it's all about Jogos. Last man standing, he has to go ahead and pass the bomb as well. But he gets spotted. What was that? What was that? Amazing shot coming from DLQ, man. Locust, okay, that's the gun is Locust precisely, guys. Apart from that, one more spottation. That's what we are waiting for. The spottation is right. He will be able to deliver that beautiful blowing at one shot, one kill can actually come up. Before that, he has to also go ahead and plant the bomb. Definitely, double task are there. Too much aggression is going to be there from that particular corner. The sprays are there. Look at that, Jokos, the beast. Is not going to stop. Top Pikachu on the other corner is also trying his level best to devour, but no, he fails to do so. Attacker, that means Vitality is once again bouncing back. Vitality, an amazing game. What a beautiful performance, man. Lovely. देखिए वाइटैलिटी के लिए देखिए कई बार ऐसा मोमेंट हुआ है जहाँ पे वाइटैलिटी शेक हुई है. यानी कि अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली सेकंड राउंड की, वहाँ पे वाइटैलिटी के लिए लगा था कि पूरा गन खतरनाक तरीके से यहाँ पे हाथ से निकल सकता है. बट देखते देखते पूरा गेम यहाँ पे उनके हाथ में आ चुका है. अब देख सकते हैं वाइटैलिटी के पास प्रेशर बन रहा है. बट पेपे की अगर बात करी जाए, डबल किल ट्रिपल किल निकाल चुके हैं खिलाड़ी. ही इज नॉट गोइंग टू स्लो डाउन. इज इट गोइंग टू बी अ एस? ओह मैन, लुक एट दैट. लुक एट द परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गाइस कॉर्नर. BY15, ये शॉटगन, ये शॉट्स नहीं रुकने वाले हैं. Pepe the Jord is not going to stop anytime soon. I believe this guy is absolutely ample enough on his own. बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया एग्रेशन यहाँ पे निकाल के लेके जाते हुए दिखेंगे. लेट्स सी कितना आगे पहुंच पाते हैं फिलहाल इस सीरीज, लेकिन फिर से वहीं पे उसे एंगल होल्ड करना चाहेंगे. Oh man, amazing shot. Reloads the gun, aims steady, waiting for the right next moment. जोकोस की अगर बात करी जाए, वो भी कंफर्टेबल स्पॉट में प्रेजेंट है. बट लीजिए एरेजर की तरफ से एक अच्छा स्प्रे यहाँ पे निकल के आ चुका है. जोय बहुत ही कम एचपी पे देखने को मिलने वाले हैं. जोय को डाउन किया. इसी के साथ द गेम इज ओवर. वंस अगेन द राउंड गोज इन द फेवर ऑफ वाइटैलिटी. इंटरेस्टिंग. नाउ द साइड्स हैव बीन स्विच्ड. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कहने का गेम देखने को मिलने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वंस अगेन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाइटैलिटी की, तो वाइटैलिटी अब यहाँ पे बन चुकी है डिफेंडर. नाउ दे हैव टू डिफेंड and they have to protect the sides A and B from getting planted. तो क्या लगता है guys, हो पाएगा possibly? जो कुछ already down हो चुके हैं जोय के एक अमेजिंग DLQ के साथ. बहुत ही अच्छी शॉट जहाँ पर निकल जाते हुए दिखेंगे. पेपे, अरे भाई क्या ही खतरनाक शॉट, क्या ही खतरनाक टेक डाउन. Argon also gets taken down in a swift movement in just 10 or 15 seconds.
Game gets over, and now Special Forces, should I say, are back in the game. Top Esports. What an amazing game! What an amazing performance, man! They're completely turning the game in their favor. Amazing, guys. और मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल डैनियल रेटलिफ बोल रहे हैं कि दिस आर जस्ट स्क्रिम्स. भाई स्क्रिम्स नहीं है, दिस इज कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया इन्विटेशनल्स. रिमेंबर गाइस, 1000 सीपी दाव पे लगा हुआ है. द चैंपियन विल गेट 40,000 30,000 आई बिलीव. या गाइस आप लोग जानिए, समझिए इस चीज को कि यहाँ पे जो टूर्नामेंट है, जो एक मोड है, काफी खतरनाक है. अब देखिए पेपे को डाउन कर दिए तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिलहाल वाइटलिटी को कोई हरा पाएगा इस समय. टॉप स्पोर्ट्स के पास अभी उनके एक आखिरी खिलाड़ी है जॉय. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जॉय के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है. जॉय बहुत ही क्रेडिबल खिलाड़ी है अपने आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है. बट आप देखिए फिलहाल उनके गेम को, आप यहाँ पे देखिए फिलहाल बहुत ही अलग लेवल पे निकलता हुआ देखिएगा. बहुत ही एग्रेसिव वो अपने आप में निकल के जाने वाले हैं. आई थिंक सो दैट द गेम इज एक्चुअली गोना गेट पॉप्ड ऑफ क्वाइट अ बिट. आप जैसे कि देख सकते हैं इस समय टीम वाइटलिटी की जो प्लेयर्स है वो जॉय के ऊपर हावी होते हुए दिखेंगे. जॉय भी टेक डाउन हो चुके हैं. विद दिस द गेम इज प्रीटी मच ओवर एज वेल कैन सी वंस अगेन. 5 rounds in the favor of Team Vitality, 3 in the favor of Team Top Esports. Top Esports is not looking that good. Remember, guys, this is a BO5. One more chance will be delivered in hands of Top Esports to turn the tides in their favor. But still, as the narrow gap is getting narrowed, things can actually go south for them anytime soon. It will be very difficult. Looking forward to it. Let's see what happens. Pikachu still waiting for that agonizing shot to come in. Look at that once again, able to spot. Can he deliver the shot? That's the important question, guys. Okay, they're just trying to be very precautious about this particular fight. Look at that. Top Esports is not going to push forward because they know if they do, it is going to be quite risky. But Pikachu, little is trying to move forward. On the other corner, waiting for the right moment to strike on. B side has been covered by Random. Interesting enough, but Zoon also gets connected. That's interesting. Some more space, but the space are getting connected on Random. And Random is losing a few of his HP. Oh, Eraser gets taken down. Swift one. Pepe waiting for that BY15. He's still waiting. He's still waiting for that run movement. But can he attack once again? That's the biggest question, guys. What do you think? I guess Pepe has found his meta. उनको पता चल गया कि उनकी कौन सी गन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी गन से ज्यादा डैमेज दे सकते हैं. तो फिलहाल वो बस उसी के लिए जा रहे हैं. लुक एट दैट मैन. दिस इज ब्यूटीफुल. Pepe is turning the game all around in his favor. ओ यार क्या ही बोले फिलहाल, यहाँ पे मजा आ जा रहा है गाइस. Pepe की तरफ से जो गेम निकल रहा है ना, स्मूथ मैन, स्मूथ. इसे हम कह सकते हैं दैट स्मूथ गेम. His whole team is about to go down, and what happens? Pepe comes up with this shotgun, and the game changes. Amazing. Gets taken down. Pepe without need managed to put down Sams. Interesting enough, Top Esports losing one good guy of the team. Particularly, they are 3-man power right now, and Vitality is having the 4-man power. But let's not forget what Pepe can do. Pepe with that shot can easily turn the tides in his favor. Look at that. Waiting for the moment, trying to just scout where the enemy could be. Can he actually do it? Oh! Joy goes in for the shots to Random, but Random is not getting connected anytime soon. He's actually being very vigilant about this as well. Apart from that, the time is also passing. 1 minute more to go. After that, the completion is not going to be possible, and eventually Team Top Esports will lose this particular match. What will happen, guys? What do you think? Is it going to go with the overtime? Do you think, guys, the overtime will be there? Waiting for Godlike versus Revenant. Well, of course, Shitesh Sharma, Godlike versus Revenant is going to be there in the lower bracket. We have to check out that as well, interestingly. Oh, Jokers gets taken down with that beautiful Pepe shot. I would like to actually coin out Pepe shot. This is going to be Pepe shot. Because this guy, with this gun, they are made for each other. Oh, Pepe gets taken down. His Pepe shot is down in the dust right now. Moving up, our Dargan managed to take him down with that CBR4. But apart from that, some more space getting delivered. Look at that. Now, lastly, the only guy surviving from this particular team also gets taken down. And finally, Special Forces are once again bouncing back. Currently, guys, the score is 5 versus 5. If the score goes 6-6, we'll get to see the overtime. And if the overtime comes in, it will be lovely, honestly. The bomb has been picked up. Who is going to pick the bomb? It's Pikachu who is going to plant the bomb, if it is possible. But till now, I don't see that the bomb has been planted.
इट वाज एक्चुअली गेटिंग प्लांटेड फ्रॉम वाइटलिटीज कॉर्नर, बट अगर वही बात करी जाए टीम टॉप की, तो उनका वो मेटा नहीं है, वो ज्यादा बॉम्ब प्लांट करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, रादर देन दे आर एक्चुअली गोइंग टू एलिमिनेट। बट पेपे इस मैच में डाउन हो चुके हैं। जॉय की बात करी जाए, जॉय बहुत ज्यादा मुश्किल एक नाजुक मोड़ पे है, जॉय को भी डाउन किया जाएगा। 6-5 का स्कोर यहाँ पे निकल के आ चुका है। ओवर टाइम का इंतजार करिए गाइस, व्हाट डू यू थिंक ओवर टाइम हो पाएगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट डू यू थिंक विल द ओवर टाइम कम इन? Man, Pepe with 20 amazing frags. Look at that. He's not slowing down. But why Eraser की भी बात करी जाए, Eraser is also quite chaotic from his own team. Well, if I talk about Vitality, they all are using assault rifles and the snipers and guns like, let's say, SMGs and stuff. But when it comes to Pepe, he's the one who is using shotgun, and the result is actually pretty clear for you guys. As you can see, shotgun can be very chaotic in the close range, and we have seen this gun performing exceptionally well. 18, 20 kills from this guy's corner is already here from this particular gun. Now Pepe and Joy, the last remaining. Joy gets taken down. Pepe's HP is way too low. He won't be able to survive, I believe. Very soon, Pepe is also going to get taken down, if I'm not wrong. He's trying to aim for it. But oh, that was a close counter coming from his corner. Interesting enough. But no, this is it for Team Top Esports in this particular matchup as well. The Guerrilla squad, or should I say, Vitality, is in the game, back in the performance, back in the deadly arena. And they are the one who is cherishing the second victory for the day. बेस्ट ऑफ 5 का यहाँ पे जो कहने का मैच है वो देखने को मिलने वाला है। वाइटलिटी वर्सेस टॉप ईस्पोर्ट्स, अ ब्यूटीफुल ब्रूटल बैटल कमिंग अप टू एन एब्रप्ट एंड। अब यहाँ पे जो कंट्रोल का मैप है वो देखने को मिलने वाला है। कंट्रोल में क्या लगता है गाइस, क्या सिचुएशन यहाँ पे निकल के आ पाएगी, क्या कंट्रोल में कुछ डिफरेंट रहेगा? बट बिफोर दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट द स्कोर्स। एज यू ऑल कैन सी, दीज आर द स्कोर्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। टॉप पेपे विद 21 kills, score of 2216, the MVP, the actual MVP of this whole match is absolutely amazing. But when it comes to the other guy, Vitality's Eraser, he also performed quite well. 1607 is the score, 15 kill, 0 diffusion. Bomb plantation की अगर बात करी जाए तो वो यहाँ पे देखने को मिली थी आर्गन और रैंडम की तरफ से, but from Team Top Esports corner, that thing was not pretty much here. Apart from that, the game is here, guys, done and dusted. As you all can see, the scores in front of you are pretty much visible. Moving up to the caster deck once again, we'll see what will happen in the next match. We are actually going to witness the carnage once again pretty soon. I guess as soon as the match gets started, we'll see how the game is going to get convoluted. Well, I just wish that Top Esports will not play the next match with the top four with the 4 players. I guess their team should be there, but eventually, let's see what happens. Okay, Top Pikachu has confirmed that the next match, third match for the day, is also going to get played with with the 4-man power. So that's actually something which is gonna make me worry. टॉप स्पोर्ट्स के लिए चिंता की बात है। सो डेफिनेटली ये टेंशन वाली बात यहाँ पे जरूर से देखने को मिलने वाली है। तो ये टॉप स्पोर्ट्स अपने मैच में क्या करेगी? कंट्रोल का मैप वैसे भी यहाँ पे काफी क्रूशियल होता है। सो आई एम वेटिंग फॉर द मैच टू गेट स्टार्टेड। एज सून एज द मैच गेट स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू विटनेस द कार्नेज, we are going to witness the backlash, we are going to witness the fight of the control in the map of firing range. Round win limit is going to be 3, round time limit is going to be 90 seconds. So these are the few things you have to be pretty much concerned about, I guess. Yeah, indeed. तो गाइस ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे लेके आती हुई दिखेंगी। ओवर टाइम का तो मैं भी काफी सोच रहा था, अभी देख रहा हूँ मैं फिलहाल लाइव चैट में, क्योंकि स्ट्रीम पे डिले है, तो अब लोग बोल रहे हैं कि फिलहाल लाइव चैट में क्या यहाँ पे 6x6 होगा स्कोर या फिर क्या होता है। well, देखिए यार, ओवर टाइम तो नहीं देखने को मिल पाया हमें पहले मैच के अंदर आज के दिन, but I expected a lot of things to happen actually, to be precise. But now I believe the match will start anytime soon. People are ready, players are ready. Jokos is ready, Argon is ready, Sams is ready, Razor is ready, Random is ready from Vitality, from Top Esports is Joker, it's Pikachu and Zoe and Zoon and Pepe. All of them are ready, and now the match has been started. I believe anytime soon you'll get the feed, you'll see how the match is going to get started. But before that, let's talk about the roster as well in these particular team. As you can see, from Vitality is Chocos, Argon है, Sams है, Eraser है, Random है, वही टॉप स्पोर्ट्स की तरफ से जॉय, पेपी, पिकाचो एंड जून देखने को मिलने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है, 30 eliminations, 2 sides to cover. What will happen? Argon gets taken down, a bad one. 29 eliminations coming from 28 eliminations now. I mean, Top Esports is being very chaotic. Wow, that's good. In the close range, Top Esports is absolutely beast, but can they actually maintain this tempo, maintain this decorum? I doubt it, man. I doubt it right now, because वो मैन पावर की कमी काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। टॉप स्पोर्ट्स के लिए ये चिंता वाली बात जरूर देखने को मिलेगी। डेफिनेटली जो अगर मैन पावर होती तो फिलहाल यहाँ पे गेम चेंज हो सकता था, बट अभी वो मैन पावर बिल्कुल देखने को नहीं मिल पा रही है। I'm pretty blown to bits right now that why this particular team is playing with a 4-man power, but जितना भी ज्यादा वो 4-man power के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा उनके लिए बैकलैश आ रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल उनके एलिमिनेशंस होते ही जा रहे हैं, एलिमिनेशंस यहाँ से निकलते जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप अगर टाइम भी देखें तो फिलहाल सिर्फ 40 सेकंड है घटे, यानी कि सिर्फ 30+ seconds are left right now, and apart from that the eliminations are way too low for the team known as Top Esports.
Vitality is having a huge cover in that particular criteria as well. The sides are not as a focus. कोई भी टीम साइड्स पे फोकस नहीं कर रही. जोकोस यहाँ पे देखिए 5 किल लेके चले गए. बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम को अपने निकालते हुए दिखेंगे. फिलहाल मानना पड़ेगा. Oh, that deadly shot was on point, brother. But eventually they have to rise. देखते हैं क्या सिचुएशन होती है. 19 for Vitality, 17 for Vitality, 9 for Top Esports. Top Esports is losing the grounds for sure. But let's see what happens guys. Top Esports कितना आगे जा पाएंगे देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है. अभी के लिए definitely एक significant impact यहाँ पे already डाल दिया गया है. What an amazing gun game, man. Love the way the consistency to be honest is coming up. A special forces known as Vitality is winning. Vitality is winning, guys. Wow. Vitality is actually trying to be on the top. Let's see क्या यहाँ पे 3-0 के स्कोर के साथ Vitality अपने आपको फाइनल्स के अंदर लेके जा पाएगी. This is the semi-finale as you all know of the upper bracket. So definitely important, definitely quite chaotic. And as you all can see, the shots are still coming up. The people are trying to attack. The people are trying to bounce off of the angles. बट इस समय अगर मैं बात करूँ फिर से शुरुआत की तो देखिए Vitality के सैम सबसे पहले टेक डाउन होते हुए दिखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट रैंडम की तरफ से देखिए अपना जो बी साइड है वो कवर किया जा रहा है. रैंडम बहुत ही अच्छी तरीके से बी साइड को पे कवर करते हुए दिखेंगे. जोन पुशेस फॉरवर्ड. जोन वांट्स टू just avoid this particular cover, but Argan managed to take him down as well. Amazing takedowns coming up. Once again, the B side is still in the favor of team known as Vitality, but right now B sides has been pretty much empty. 28 eliminations from team Top Esports. Top Esports इस समय कंफर्टेबल एक स्पॉट पे देखने को मिल रही है. लग रहा है कि फिलहाल Top Esports कमबैक अपना दे जाएगी. 4-man पावर होने के बावजूद भी कहने की गेम काफी क्रूशल देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से. ए साइड को भी कवर करने की कोशिश करी जा रही है. देखिए ब्रीफली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं Vitality के खिलाड़ी यहाँ पे. कितना ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे हो पाते हैं दैट्स व्हाट वी हैव टू चेक आउट. लुक एट दैट. Vitality अभी एक साइड को काफी कंफर्टेबली कवर कर रही है और अच्छी तरीके से करती चली जा रही है और साथ ही साथ प्लेयर्स को भी डाउन करा जा रहा है यहाँ पे. फिलहाल जोकोस की बात करी जाए सिग्निफिकेंटली क्लॉ लेके वो खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए दिखेंगे. नेड भी उनके बगल में आ चुका था तो डेफिनेटली उनके लिए सर्वाइवल उस समय काफी ज़्यादा टफ हो चुका था. ऑब्जेक्टिव ए की बात करी जाए ऑलमोस्ट अब हाथ से निकलने वाला है. ऑलमोस्ट इट सीम्स लाइक दैट द ऑब्जेक्टिव ए इज गोना गेट लॉस्ट एंड या दैट्स व्हाट हैपेंड. ए हैज बीन कैप्चर्ड. दैट्स इंटरेस्टिंग. ए ऑब्जेक्टिव इज प्रीटी मच कैप्चर्ड. वहीं अगर मैं बात करूँ बी ऑब्जेक्टिव की तो वहां जाने के लिए वहां कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा और इंक्रीज यहाँ पे करना पड़ेगा अपने गन गेम को. Vitality इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी थे. They were pretty much dominant about that aspect. Now they know that they can't be aggressive, so they are actually focusing on actually capturing the sites. So that's good enough. Capturing the site, but Pepe with 3 back-to-back shots. क्या और देखना है guys आपको? What more do you want to see? What more are you actually craving to see? बिकॉज आपको सब देखने को मिल रहा है यहाँ पे. प्लेयर्स बहुत ही अच्छा खेलते हुए दिखेंगे. मानना पड़ेगा बहुत ही शानदार एक गेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है. फिलहाल बहुत ही शानदार एक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है. Look at that, another shot from Pepe's corner. He's constantly bashing all around. Pepe's amazing DLQ-33 is not going to stop. What is this? Is he a beast? शॉटगन दीजिए, स्नाइपर दीजिए, एएमआर दीजिए, सब कुछ दीजिए इनको बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस नहीं रुकने वाली है. जोन की बात करी जाए जोकोस की तरफ से भी देखिए 2 खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा. पेपी को टारगेट कीजिए. पेपी को टेक डाउन किया बिकॉज उनको अगर आप टेक डाउन नहीं कर पाते हैं देयर इज नो सेंस ऑफ कमबैक कमिंग अप गाइस. फॉर्चुनेटली अब देखिए एक रिटेलिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. पिकाचो को डाउन किया जाएगा. सैम्स की तरफ से ट्रेड. इंटरेस्टिंगली बोथ ऑफ द टीम्स आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ. आप जैसे कि देख सकते हैं Vitality हार्ड पॉइंट को भी कैप्चर पॉइंट को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही है. बट टॉप ई-स्पोर्ट्स काफी नाजुक मोड पे टॉप ई-स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगे. आई थिंक सो टॉप ई-स्पोर्ट्स विल बी एबल टू काउंटर. बट क्या वो काउंटर यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा? देखते हैं किस तरीके से गेम निकलता है. Look at that, B side almost getting lost, almost getting captured, and yeah, the B is also captured. Vitality back and forth wins the second one as well. What an amazing guys, what an amazing game. मतलब बोलना ही भूल गया भाई आधी चीज से तो मैं पे. But anyway guys, Elevate is here with us. Let's see what happens. Elevate, what do you think what will happen between Vitality and Top Esports? This is the last match of the control mode. Vitality already is winning the first 2 matches. That means the score is 2-0. This is the third one Vitality has to win, and Vitality is very close to winning it. Yes, exactly. I mean, the way things are going, already 2-0, and Vitality also have that man advantage. It should be really easy playing on the defensive side of things as well. Just need to find a couple of kills or just defend it till the very end, and you will be able to qualify for this one, and you will be moving on into the bracket. It's looking very nice. It's looking very crisp for Vitality right now. They are down in the lives department for now, but nonetheless, they should be able to hold on strong. They just need a couple of kills and just need to be there. I mean, yes, of course, they are just trying their level best to survive and eventually make it the day out for them. Apart from that, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें निकल के आती है वो उनकी किल्स है. कितने किल्स निकालेंगे बिकॉज पिछले मैच में तो उन्होंने देखिए पिछले राउंड जो था फिलहाल उसमें उन्होंने साइड्स को कवर करके पॉइंट उठाए थे. बट इस मैच में उनके लिए फिनिशर्स भी यहाँ से निकलते जा रहे हैं. हालांकि टॉप ई-स्पोर्ट्स विद द लॉस ऑफ मैन पावर इज डेफिनेटली टफ इनफ फॉर देम. Yes, exactly. They are tough for them. They are top Pepe, as you can see,
beautiful with the sniper in even response mode. Live advantage once again in the favor of top. But कितनी देर तक वो live advantage रख पाएंगे? That is the question. And Peppy just crazy gets 3 kills over there. That is gonna play a very big factor down deep into the game because he finds the fourth as well. Can someone stop this guy? I don't think anyone has the answer for him right now. 25 seconds left on the clock, and now the pressure onto the A side and the B side as well. Top right now, they are in command. Although they have just 4 people, they have the lives advantage. A flag has had the first tick of progress. Jokos finds Zoon, but is it going to be enough? And Jokos, Argan, and Sam all finding 3 kills. They are going to push top out of the trailer side. And now, once again, pressure all again on top. Well, indeed, the pressure is coming. Top Esports is failing to connect some close shots. Or Peppy gets also connected once again. Peppy is taken down. It's 7 versus 9 eliminations coming up. Sides A is actually getting captured by Top Esports, but is it possible? I don't think so. It's not going to be that easy. Once again, the spray comes in. Oh, fails to connect the shot. Vitality is at a very nervous end. बहुत डिफिकल्ट हो चुका है वाइटलिटी के लिए इस समय, बट देखते देखते टॉप ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी डाउन होते हुए दिखेंगे. टॉप ई-स्पोर्ट्स अबाउट टू गो डाउन, आई बिलीव 3 eliminations more to go, 2 more to go. That's a tough one. That's a tough one. Vitality may go down, or is it going to be Top Esports? Well, before that, time runs out, and it's Vitality which is going to be the finalist from this around this area, and the team which is going to go in the losers bracket, I believe, lower bracket, is going to be the one which is known as Top Esports. Yes, exactly, and I think they will be up against Godlike Esports if they are able to defeat Revenant. That is, but yeah, the winner of Godlike and Revenant will be facing up against Top Esports if I'm not wrong. But Vitality, a very strong performance after that 3-2 reverse sweep against Godlike. They have come out guns blazing and they've done a beautiful clean sweep onto Top Esports as well. Top Esports also down by 1 man. They gave a very strong fight, a very valiant effort coming in from them, but it was just Indeed. not enough in the end. Vitality, Jokos 26 kills, Random with 18, Sams with 15, Argan with 12, Verxsa with 9, followed by Peppy with 20, Joy with 16, Zoon with 18, and Pikachu with 14 kills as well. Indeed, a beautiful one, no doubt on that. A beautiful matchup coming from these guys. Corner, what an amazing gun game. Honestly, अगर मैं बात करूँ इनके परफॉर्मेंस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिली है. बट अब बात ये रह जाती है कि फिलहाल आगे आने वाले मैचेस में क्या स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट होते हैं, आगे आने वाले फाइट्स के अंदर क्या सिचुएशंस यहाँ पे निकल के आ पाती हैं. बट करेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस वो फर्स्ट मैच फॉर द डे इज प्रीटी मच ओवर. एंड अगर मैं बात करूँ उसके बाद अगले आने वाले मैचेस की, तो देखते हैं फिलहाल वहाँ पे क्या सिचुएशन निकल के आ पाती है. सो येस, डेफिनेटली गाइस, वंस अगेन, the fights are going to be quite amazing, but before that, we will take a short break, and then we'll be back again on the desk and tell you how the match is going to start.
Welcome aboard once again, ladies and gentlemen. We are back on the desk, and now we are going to inaugurate another beautiful match for the day. But before that, let's talk about the brackets. Let's talk about the teams which are going to face off each other at this moment, particularly. Well, according to the brackets, as you all can see, well, I guess the brackets are going to come anytime soon. And yeah, there we go. According to the brackets, the first match was between Top Esports and Vitality won it quite beautifully. And when it comes to another beautiful match of semi-finale, it's going to be between IFM Esports and T2P Infective. Well, T2P Infective is here by the forfeit done by NS official in the last day, and now T2P Infective is going to face off IFM Esports, which was able to counter SS Verxsa with a 3-1 score in the favor. So definitely a huge comeback has to be needed from this particular team. Apart from that, on the lower bracket, I guess we are waiting for the match between Revenant Esports and Godlike. But one more thing that we have to conclude, that is that NS official is going to move on to the next one because Verxsa is actually forfeited for the day. Well, I guess let's talk about the prize pool as well. Moving up ahead, as you can see, this is the prize pool. The prize pool is of 1 lakh COD points. That's absolutely amazing. And apart from that, if we talk about the rank number one, well, that's going to get these particular teams. Whoever the champion is going to get 30,000 CP. Rank 2 will get you 20,000 CP. Rank 3 will get you 12,000 CP. And 4 will also get you 12,000 CP. Apart from that, when it comes to rank 5 to 8, well, I guess then you're going to get 6,000 CP each. And the MVP presented here is going to get 6,000 is going to get 2,000 CP as well. But apart from that, one more thing, that is this is the Call of Duty Mobile India Invitational presented by uh, co-powered by Activision as well. So guys, make sure to actually like, share, and subscribe. And if there is any query, feel free to ask. Yes, exactly. If there's any query, we are here to solve your doubts, and the moderators in the chat as well. But yeah, don't forget that the giveaway is still going on, guys. You know the rules. It's very simple. To join the giveaway, you have to join the Discord channel, and for the YouTube giveaway, you just have to be active in the chat. I will explain the Instagram giveaway as well in a couple of minutes. But yeah, before that, we are gonna have a quick look at the brackets and how things have been structured so far in the tournament. Trader, can you take it away? Well, indeed, I guess we are going to talk about all of those stuffs, and eventually, guys, make sure to actually like, share, subscribe. And apart from that, the giveaway. That's the only thing we have to actually talk about. Apart from that, let's talk about the veto as well. Well, the veto, according to the whole stats, is going to be first match is going to be hard point in the map of Summit. IFM is going to be on the red corner, and the team known as T2P Infective is going to be on the blue corner. Then Search and Destroy will come up. It will be in the firing range. IFM again in the red corner. Control will be there in the map of Raid. Again, a beautiful map, no doubt on that. Will it be a 3-0? Will it be a 3-2? Will it be a 3-1? We have to check out, guys. क्या होता है अब फिलहाल आप लोग खुद ही कमेंट डाउन करके बताइए आपको क्या लगता है किस तरीके से सिचुएशन निकल के आ सकती है. आई मीन डेफिनेटली अगर बात करें जाए यहाँ पे आईएफएम ई स्पोर्ट्स की, तो उनका हमने गन गेम देखा था. टी टू पी इनफेक्टिव का मैं गन गेम नहीं देख पाया था जस्ट बिकॉज एन एस ऑफिशियल आई गेस गिव दैट पर्टिकुलर मैच इन द हैंड फॉरफिटेड इट. सो डेफिनेटली ये जो मैच है वो काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा दोनों ही टीम्स के लिए. वेटिंग फॉर द गाय फ्रॉम टीम T2P Esports to join, and after that the match will start. Once again, let me remind you guys, the round score limit is going to be 250 and the time limit is going to be 10 minutes if I'm not wrong. So definitely guys, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी और काफी अमेजिंग एक वे में मैच को लेके जाएंगी. Yes, exactly. And I will quickly explain the giveaway to you guys for Instagram. It is very simple. आपको post like करनी है, post को story पे share करना है, tag any 3 friends in the comment section, and 5 winners will be decided from Instagram. तो बहुत ही simple है. Codm India को जाके follow करो, जी. tag any 3 friends in the comment section, story पे share करो, tag us, and 5 winners will be chosen. YouTube का गिव अवे तो बहुत ईजी, आपको बस चैट में एक्टिव रहना है. एंड फॉर डिस्कॉर्ड यू हैव टू जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर एंड रिएक्ट करना है आपको चैनल पे आके, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द गिव अवे. बट ब्रैकेट्स जैसे कि आप सभी को मैं एक बार और बता दूं, टीम टॉप वर्सेस वाइटैलिटी हुआ था आज पहला मैच, जिसमें वाइटैलिटी जीत के आगे जा चुकी है. वी आर गोना विटनेस आईएफएम वर्सेस T2P इन्फेक्टिव नाउ, which is gonna happen in a couple of minutes time. बट विद दैट बीइंग सेड, जो लोअर ब्रैकेट हमारा है उसमें खेलने वाली है आज गॉडलाइक वर्सेस रेवेनेंट स्पोर्ट्स, अ मैच व्हिच इज गोना बी ऑफ अ वेरी हाई कैलिबर मैच, बिकॉज जो हारेगा वो टूर्नामेंट के बाहर है, बिकॉज बोथ दीज टीम्स हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम, सो दे डोंट हैव सेकंड चांसेस एनीमोर. तो अगर आप यहाँ पे हार गए तो आप बाहर हो. एनएसएस वर्क्सा वर्सेस एनएस ऑफिशियल के मैच में एसएस वर्क्सा फॉरफीट, तो एनएस ऑफिशियल ऑलरेडी आगे जा चुकी है, तो दे विल बी फेसिंग टीम टॉप. अभी जो यहाँ से हारेगा वो चले जाएगा सीधा लूजर ब्रैकेट में एक बार, एंड विनर ऑफ गॉड लाइक वर्सेस रेवेनेंट स्पोर्ट
will be playing either IFM or T2P Infective. Only time's gonna tell. We are all set and ready, just waiting for T2P Infective's last member to join up, and we will be heading into the live action real soon, guys. By the way, meanwhile, share the stream, subscribe to the channel if you're new, turn on post notifications so that you guys get notified whenever we go live. And yeah, share Mhm. the stream. Well, indeed, I guess we are going to witness the carnage really very soon, and I believe from T2P is going to be Pianist, Lucid, Pure, Progressive, and Formal is also there as well. Well, I guess the match is about to start anytime soon because the lobby is pretty much ready. People are pretty much ready here, and once the match gets started, I believe we are going to see and check out that how the carnage will focus. 250 is the score limit. Time limit is going to be of 600 seconds. And as we are talking about the giveaway, guys, go ahead on the Instagram. You have to just follow COD Mobile India. That is the Instagram page of the COD Mobile India. And apart from that, you have to check out that giveaway post. You have to like it. You have to share it on your story along with tagging your three good teammates or friends anyway. So you can actually be registered for the giveaway, and eventually five guys are actually going to get selected each day, and those giveaways will be there for sure. Apart from that, guys, yesterday's winner, as we were talking about, that was bot 010, if I'm not wrong, from YouTube, and IG Evil from the Instagram handle as well. So definitely, guys, I guess daily the giveaway winners are going to get announced. So guys, go for it. गिव अवे के लिए जितना ज्यादा हो सकता है पार्ट लीजिए वहाँ पे लेजेंडरी लापा और साथ ही साथ या फिर आप मेसी बेंडल भी यहाँ पे ले सकते हैं. तो दोनों चीज आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, बट अभी के लिए फिलहाल मैच स्टार्ट होने का बस मैं करूंगा वेट, बिकॉज जैसे ही मैच स्टार्ट होगा हार्ड पॉइंट का ये पहला मैच टेक ऑफ होगा एंड काफी क्रूशल रहेगा समिट के इस मैप में ये मैच. यस एग्जैक्टली, हार्ड पॉइंट ऑन समिट सबको पसंद है मैप और हार्ड पॉइंट खेलना भी, बिकॉज एक हाई किल मैप जरूर से होता है ये मैं कहूंगा, बिकॉज द वे द हार्ड पॉइंट इज स्ट्रक्चर्ड, छोटा सा मैप है, रोटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता. द ओनली लॉन्ग रोटेशन आई वुड से इज फ्रॉम P3 to P4. दैट इज द लॉन्गेस्ट रोटेशन आई वुड से, बिकॉज ए लॉन्ग से होते हुए जाना टू द इंटायरिटी ऑफ टॉप स्पॉन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर से हो जाता है, थोड़ा लंबा जरूर से, बट बाकी P1 P2 तो बहुत ही क्लोज है एंड बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में फाइट्स देखने को मिलती है. सो SMGs आर यूजुअली प्रेफर्ड, बट जिस हिसाब से मेटा है वी विल बी सीइंग कपल ऑफ क्रिक्स, कपल ऑफ CBRs as well. But yeah, really interesting to see what's gonna happen. We are all set and ready. 15 seconds on the timer will be updated soon, and the squads will be on your screen as well. But with that being said, we are all set. T2P Infective versus IFM, the second match in our upper brackets. Let's see what's gonna happen. Indeed, a beautiful match is waiting for now. Moving up ahead when it comes to team from the blue corner, it's going to be Pianist. That is T2P Infective's Pianist, Lucid, PR, Progressive, and Formal. When it comes to the Gorilla squad, or should I say IFM's member, Candy M, Yuzuru, Bless is there. One more guy has to be here right now, and then after that, the match will start, I believe. बट अभी के लिए वेट करेंगे गाइस उस एक खिलाड़ी का ज्वाइन करने का, और उसके बाद देखेंगे फिलहाल किस तरीके से गेम निकल के आ सकता है. एंड देयर वी गो, Natty is also in the lobby. Finally the 15-second timer is going to kick off, and eventually very soon the game is going to get started. The carnage will get forecasted. Who is going to hold up the hard point for the longest time period, and eventually who is going to get the highest amount of points is the question we all want to get an answer for. Moving up ahead, there we go, the battle starts. Progressive is actually coming up with the Cali 6. He's just trying to run as soon as he can go, so that he can actually cover up some hard points. But look at that, needs are coming from both of the angles. Apart from that, one beautiful shot gets taken down, but the first blood is there from Progressive's corner, but still the hard point is in the favor of team IFM, if I'm not wrong. Yuzuru was there collecting 5 points. That's good enough, but now once again I believe Candy is here to counter, and with 9 amazing points Candy is moving forward. Yes, exactly. And IFM, they have the control for hardpoint right now. But I would say top heaven in favor of T2P Infective right now. They are winning their gunfights. They have the numbers over there. So having top heaven is a really important part in the game of hardpoint in this map, particularly because you get basically entire coverage of the first HP. But even though T2P have that, IFM just too strong, holding the hardpoint, holding the stairs. They have all the angles covered, and even though they're winning their fights up top, they're not able to get any points on board. So that is going to be a real difficulty for the team of T2P Infective. But yeah, this is going to shift now onto P2. You are favoring the team of IFM heavily. They were able to get decent amount of points. Bless is going to be the first man who's going to try to hold down this hardpoint for his team. He's getting pushed by a couple of enemies, but nonetheless, he stands strong. The first wave has been sent back, and now the second wave of T2P reinforcements begin.
Indeed, the reinforcements have got advantages as you can see now. They are trying to level to attack on the positioning. Hard one is in the favor of Team T2P Infective, but how long they can actually hold is the biggest question coming up. Look at that, 45 points coming from Team IFM and now 21 and uprising from that area is going to be Team T2P Infective. Look at that, the score is actually still getting charted. T2P Infective Lucid is actually being very chaotic. He is actually covering every single angle from wherever the enemy is coming up. Infective is able to defeat them. Finally, Candy pushes forward with a beautiful shot. Once again, the hard point is in the favor of team known as IFM. Yes, exactly. IFM being very consistent in getting these points, even though they're losing their gunfights, they just being inside the hard point, and that is something which T2P have not been able to do. But finally, they get inside the hard point, but get pushed right back out. IFM already winning, trying to win rotations for P3, but it's gonna be the team of T2P which has already established themselves and have control boxes as well. You can see Formal just waiting with his CVR, waiting to get pushed. He's gonna get pushed from Heaven Top first. Calls the guy back from Yuzuru, who's got a challenge once again. Can he win the fight? He will be able to win that fight. It's a little bit of assist coming in from his teammates as well. And now they're gonna push from the right side, pushing from green. It's gonna be interesting to see can they win this point. They're getting 2 kills. That is gonna be huge. Candy finds one, backs off, has to reset. As the CJ using it at quite the long range over here. I said beautiful first 2 shots, gets that headshot. Really nice shots coming out of him, but it is not enough. T2P hold on. And now the second line of attack coming in from IFM. Nat is gonna be the first guy in. Gets sent back to spawn. Yuzuru gets one, does not get traded out. Still survives, finally gets traded out. Formal is gonna get traded out. IFM Bless coming with the quick shots. Not gonna be enough. IFM deciding that you know what, maybe let's just give up this. So let's focus on P4 and try to maximize our points over there. And now the setup for P4 is gonna begin. Well, indeed, they are trying their level best to attack and get the position points in their favor. Well, moving forward, the hard point is not in favor for the moment, but fortunately, once again, IFM is trying to incline a lot, but T2 Infected, the way they are actually counter the lead is absolutely mesmerizing. That Sparrow, unable to attack, unable to get any kind of consistency, but apart from that, कुछ और shots भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं, कुछ और takedowns भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं for the brief moment. Target अभी 250 points का है. Purifier यहाँ पे summon किया जाएगा, but he was able to get a point, but apart that, he was also taken off. That's an interesting gun game coming up. Lucid की बात करें लगातार यहाँ पे कहने के पॉइंट्स होल्ड करते हुए दिखेगी. T2P Infective इस मैच में काफी अच्छा खासा निकल रही है. शुरुआत उनकी काफी ढीली देखने को मिलती है, लेकिन अब जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, that's absolutely commendable. Yuzuru with that amazing Sparrow kill. 3 किल यहाँ पे निकाल चुके हैं Yuzuru और इसी के साथ लीड फिर से यहाँ पे देखिए काउंटर करने की कोशिश करी जाएगी by the team IFM Esports. How far they can go, that's the biggest question coming up. Moving upward, IFM Natty with some good Sparrow kills. Tried his level best to move forward, but gets countered at the same exact moment. On the other corner, Yuzuru moves in with the CBR. Tries his level best to attack and maneuvers a shot in front of it. Just like that, IFM is once again at the backside area, and Team T2P Infective is gaining the points back and forth. They are 100 points is there in the favor. Candy and Natty, both of them from the team IFM Esports, are being very chaotic. Yes, exactly. And currently, it's going to rotate back to P1, and we saw IFM have a very strong hold over here. Can they repeat that? But looks like Lucid is going to be the man who's going to be in charge from the side of T2P to make some noise happen over here. I would say. Left shut down by MM, getting 2 kills on Lucid and Progressive. That is going to be huge. Giannis is going to get shut down. Yes, getting 2 kills as well. That is going to be huge. And IFM back inside of P1. This is the hill where they found their initial success. Can they repeat it? That's the question. Players falling from IFM, but IFM are having control over the control area. And now Hardpoint once again in the favor of Team T2P Infective. The surviving trophy systems are going to come out, and I think they will start to run away with this one real soon. हाँ देखिए यहाँ पे तो गाइस जो शॉट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं फिलहाल टीम इन्फेक्टिव की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. टी2पी इन्फेक्टिव यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पकड़ बना के बैठी है और यहाँ पे देखिए अगर बात करी जाए सीबीआर4 के इस कॉम्बो की काफ़ी अच्छा देखने को मिला. बट पियानिस की तरफ से अंडर ड्रोन का इस्तेमाल और गाड़ी को डाउन करेंगे. अबार्ट फ्रॉम दैट के बदल एम यहाँ पे दो कॉम्बोज यहाँ पे कर चुके हैं. अच्छे किल्स देखने को मिले बट फिलहाल कुछ खास आगे नहीं निकल के पाए. 2 किल्स एक साथ यहाँ पे निकालते हुए दिखेंगे. यूजुरू बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही है यूजुरू की तरफ से भी, बट फाइनली उनको भी टेक डाउन किया जाएगा. यूजुरू यहाँ पे बैक साइड लेके आते हुए दिखे थे, बट देखते अभी जो आईएफएम का एक होल्ड है वो अब यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखेगा. आई बिलीव इन द नेक्स्ट हार्ड पॉइंट, और अगर आईएफएम इस चीज में सक्सेसफुल होती है दैट कुड बी लवली फॉर देम. बट जाता है लग रहा है देखिए फिलहाल आईएफएम पूरी कोशिश कर रही है इस चीज को लेकर, और देख सकते हैं फिलहाल इस स्कोर यहाँ पे बहुत रीच आउट कर चुके हैं. सौदा आश्रय भी है बहुत जल्द यहाँ पे टच कर सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आईएफएम 100 पॉइंट्स का जो एक स्कोर लिमिट है वो इजीली टच यहाँ पे कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू द अदर टीम्स लाइक लेट्स से इन्फेक्टिव देयर वन से कोशिश जारी है उनकी तरफ से भी रिटालिएट करने की, और लीजिए रिटालिएशन आपके सामने है. स्पैरो हाथ में लेके खड़े हैं, सामने से कोई भी आएगा तो उन्हें डाउन करेंगे. एग्जैक्टली जैसे देखने को मिला, स्पैरो किल वाज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट.
One more gets spotted, one more gets taken. Now that's interesting. T2P Infective is still leading the charts with 150 points, still counting. Away on the way to actually go out and claim 200 points, but can they actually do it? Well, seems a little bit tough because now the team known as IFM Esports is slowly and but steadily trying to catch up. Although this area is not that easy to catch up, but yes, of course, they're trying their level best too. And now, finally, in just 10 more seconds, I believe they might be able to catch it up. But finally, once again, Pianist comes in, scoops the hard point in his favor. Yeah, but IFM playing deep inside the first. I was trying to gain the spawns, but T2P just too good at this point. Now AM is gonna come in with a Sparrow. Can he find a couple of kills? He finds two. Can he find a few more? That's the question. Nope, gonna get shut down. Does get progressive though. So IFM inside of the hard point for now, but they have their work cut out for them. Bless getting one kill with that gravity vortex. That is gonna be huge. He's gonna have that gravity vortex set up in case anyone pushes. Candy has a Purifier out as well. He's gonna get that kill. Backs off, tries to reset. Gonna get pushed by Bear up next. Can he shut down Bear? Yes, he does. He has one more guy in front of Progress to finally get that kill. Arrow being used. All sorts of postings being used right now. And T2P Infective back inside the hard point. Beautiful use of the gravity vortex. They're gonna get the hard point in their favor once again. They will be able to cross 200 points over there. Well, indeed, I believe they are close to it, but eventually, how close is going to be that? Well, we are looking at Lucid पीछे यहाँ पे हटने की कोशिश करेंगे बिकॉज जानते हैं कि फिलहाल अगर ज़्यादा देर तक वहाँ पे खड़े रहे तो उनके ऊपर दिक्कतें आ सकती हैं उनको स्पॉट यहाँ पे कैसे सकते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें जो आईएफएम की देखिए धीरे धीरे करके वो भी कैचअप करना शुरू कर चुके हैं धीरे धीरे करके वो भी एरियाज को कवर करके पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं हार्ड पॉइंट अभी के लिए उनके नाम है बट फिलहाल सिर्फ 7-8 सेकंड्स और यहाँ पे देखने को मिलेगा 145 प्लस का जो पॉइंट स्कोर है वो यहाँ पे जरूर से टच कर सकती है टीम बट नॉट मोर देन दैट कुछ लीड से पॉइंट यहाँ पे किए गए साथ ही स्पैरो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है इस खिलाड़ी के हाथ में उनके पास यहाँ पे वो ऑपरेटर अनलॉक हो चुका है तो फिलहाल उसका जल्दी जल्दी इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेटर रहेगा बट लुक एट दैट स्पॉटेशन कॉमल की तरफ से बहुत ही अच्छा खासा एक टेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल चुका है अगले हार्ड पॉइंट को यूज करने की कोशिश है हंटर किलर ड्रोन भी अपॉइंट कर दिया और लीजिए हंटर किलर ड्रोन के इस्तेमाल से यहाँ पे शहर को डाउन जरूर से करते हुए दिखेंगे लेकिन नीड एंड बाकी की चीजों का अटैक भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप देख सकते हैं ब्लेस को डाउन किया यूजरू को डाउन किया यूजरू की तरफ से प्रोग्रेसिव यहाँ पे टेकडाउन होते हुए दिखते हैं इनकी तरफ से एक और खिलाड़ी और लूसिड का यहाँ पे देखिए किल स्ट्रीक आ चुका है लूसिड नहीं रुक रहे हैं समय पियर की बात करी जाए स्पैरो किल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं पियर की तरफ से 200 पॉइंट्स का जो आंकड़ा है वो टच कर चुकी है टीम T2P Infective is actually leading the charge लगा था कि कहीं ना कहीं इनका जो गेम है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा बट आप देख सकते हैं फिलहाल इन्फेक्टिव का गेम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव निकल के आ रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है गाइस अगर सोचिए यहाँ पे ये फाइट निकल के आ रही है तो प्लीज बी अवेटेड बिकॉज Godlike वर्सेस रेवेनेंट भी यहाँ पे आने वाला है इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो आपको वही देखने को मिलेगा बट ये है बेस्ट ऑफ 5 यानी कि इसके अभी यहाँ पे 4 मैचेस और बाकी हैं अगर टीम वहां तक टच करती है तो यहाँ पे 4 मैचेस देखने को मिल जाएंगे 2-2 का स्कोर अगर हो जाता है तो डेफिनेटली the 4 matches will be played but अभी के लिए जहाँ तक देखने को मिल रहा है पहला मैच फॉर्चुनेटली आई गेस लग रहा है कि टीम T2P इन्फेक्टिव के हाथ में जा सकता है Yes, exactly. And T2P Infective, even though the struggle start है, but अभी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कम बैक किया and IFM को ज़्यादा points दिए नहीं after that initial first 2 hills and after that it's been all T2P Infective, all T2P Infective out there. And IFM starting struggle reason hardcore उनके फेवर में जरूर से but contest भी यहाँ पे लूसिड को डाउन जरूर से किया और इनके सामने प्रोग्रेसिव दिया क्या नहीं सामने प्रोग्रेसिव या सी डाल हार्ड पॉइंट सो फॉर किसी के भी फेवर में नहीं है या IFM बस कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही है और थोड़ी दिक्कत जरूर तो हो रही है बिकॉज प्रेशर बढ़ता हुआ उन पर नजर आ रहा है बिकॉज अपोनेंट्स ऑलरेडी जो है 200 पॉइंट्स क्रॉस कर चुके 230 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है एंड आप अभी तक 150 पॉइंट ही क्रॉस कर पाए तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर थे बट IFM स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग स्टिल फाइटिंग नॉट गिविंग अप फाइट नॉट लीविंग द हार्ड पॉइंट एंड या आई थिंक दिस विल बी पुश्ड ऑन टू अनदर P2 और they can probably finish it out here unless IFM pushes something. There we go, the push is coming up and the pushes are real. आप जैसा कि देख सकते हैं इन्फेक्टिव की तरफ से कोशिश जारी है स्पैरो किल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं पर शॉट जरूर से लिए लेकिन कोई खासा कमबैक वहाँ पे देखने को नहीं मिल पाएगा अगला हार्ड पॉइंट यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी टीम T2P इन्फेक्टिव के खिलाड़ी ऑलरेडी अगले हार्ड पॉइंट को होल्ड करने की पुरजोर कोशिश यहाँ पे करते हुए देखिए शॉट्स निकल के आ रहे हैं ग्रेविटी वोटिंग यहाँ पे निकाली गई है देखते क्या अपॉइंटमेंट रहता है खास फायदा यहाँ पे निकल के नहीं आ पा रहा है इस प्लेयर के लिए बट देखते देखते हार्ड पॉइंट कवर करने की कोशिश ज्यादा सक्षम नहीं हुआ है फिलहाल लीड बहुत ज्यादा क्लोज है सभी जीतने के फिलहाल यहाँ पे T2P इन्फेक्टिव इज वेरी क्लोज to win this particular matchup and look at the contestment that they're going for. Sparrow again comes in. Let's see how the shots are going to get utilized. Well, there we go. The Sparrow shots are coming for sure. 247 points. That's interesting. Once again, the lead has been countered. Once again, T2P Infective is trying to push forward and gain the points that is actually needed for them to win. But when it comes to FM Esports, they're giving one hell of a competition to them. Yes, exactly. And if this keeps on, we are going to see this push to P3. But finally, T2P Infective. They stop IFM in their tracks. IFM trying to make a comeback like Godlike yesterday, but it was just
a little bit too late for that comeback to happen. T2P Infective was already well established above 230 points, while IFM was still below 150 points. But yeah, nonetheless, well played by them. A last bit of struggle from them, valiant effort. But yeah, Pianist with 49 kills, almost a 51. T2P Bear with 43. Lucid with 38, Progressive with 31, and Formal with 29 kills as well. Candy, 40 kills for him. Yuzuru 37, M 35, Natty 27, and Bless with 24 kills as well. Well, what a match, what a gun game, what a fight coming from these two giants. Well, definitely, I guess there is a buffer of 59 points coming from the particular team of T2P Infective. That was an absolutely amazing match, but I believe it's coming up. Things can actually change because the next match is going to be Search and Destroy in the firing range. And definitely, we all know, should I say, Search and Destroy is going to be very crucial. 7 is the round win limit. And apart from that, every round is going to get you 2 minutes of a buffer time period where people can actually play and eventually perform. So let's see how the game is going to get, how the fights are actually going to be there in that particular arena as well. Search and Destroy, quite an amazing one. Yes, exactly. SND is coming up. I think there are going to be some changes on the side of T2P because उनका एक player छोड़ के जा चुका है. I think it's Formal. Yeah, Formal छोड़ के जा चुका है. So there will be a change coming in from their side. It's going to be SND on firing range. Really interesting. IFM need to win this one to tie the series. Right. And T2P need to win this to extend their lead to a 2-0. Let's see what's gonna happen. Really interesting last segment of that match, I would say. जब दोनों ही team एकदम turn up हो गई थी, IFM got fired up, and yeah, really amazing from IFM in the end, but it was just not enough. With that being said, T2P Infective versus IFM. Game number 2 coming your ways very soon, guys. It's going to be Search and Destroy and Firing Range. 7 is the magical number needed to win. Until unless we tie at 6-6, then it becomes 8, 9, and so on and so forth. But yeah, hoping for a good game once again and hoping that it goes down to the wire. Well, indeed, hoping for the best. But moving up ahead, guys, let me remind you once again there is a giveaway of 15 Messi bundles and other things as well. There is a giveaway. So, definitely, guys, if you want to go ahead and grab the giveaway, what you have to do that you can either be active on the live chat of this YouTube channel on this particular stream, then you can get it. And apart from that, you can actually go ahead on Instagram and make sure to follow COD Mobile India page. That is the official Instagram handle of this particular organization. Apart from that, when it comes to the sharing and story liking, I guess that is what you have to do, and tag your 3 teammates. Then only you will be able to be eligible for the giveaway from the Instagram. But apart from that, Discord पे भी giveaway हो रहा है, तो guys Discord भी join कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर हमारे मॉडरेटर्स आपको प्रोवाइड कर ही रहे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी के लिए देखिए बस वेट है तो बस एक ही चीज का, दैट T2P के वो जो फिफ्थ प्लेयर है वो आ जाए, एंड जैसे वो फिफ्थ प्लेयर आते हुए दिखेंगे वैसे आपको एक गेम स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, एंड देन विल विटनेस द कार्नेज. Yes, exactly. And T2P के last player का वेट है, and a change coming in from IFM as well. Bless going out and Enigma Ghost is gonna be replacing him for SND on firing range. So देखना पड़ेगा how these changes are gonna favor them. Hopefully in a positive way because they need this win to tie the series, and T2P need this win to extend their lead and probably advance in the upper brackets. You don't want to go down into the lower brackets. Lower brackets में जाना कोई भी team पसंद नहीं करेगी because जो teams lower bracket में भी है, they are tough teams, not at all. अभी टॉप esports भी वहां पहुंच चुकी है, one of the better teams in the tournament, I would say. And yeah, T2P Infective versus IFM should begin very shortly. Just waiting for the last guy from T2P to join. And IFM already with their final changes being made. Sooner or later the game is going to begin, and yeah, we're going to head into live action. Well, let's see how the action gets started. There's a main, I guess, thing. There's a main theme right now. Once again, let me remind you guys that according to the veto, search and destroy firing in the firing range map is going to be there. IFM is going to sit in the red corner, and the other team, that is T2P Infective, is going to sit in the blue corner. Apart from that, next one is going to be control in the map of raid, and after that, hardpoint in the map of standoff, and after that, at last, it's going to be search and destroy in the slums. So definitely, these are the things which we have to check out. The guns that have been banned is gonna be Annihilator and Claw. So yeah, definitely guys, let's see किस तरीके से यहाँ पे players अपना best देने की कोशिश करते हैं. Gravity Vortex gun यहाँ पे use कर रहे हैं players, Purifier यहाँ पे use कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हंटर कलर ड्रोन प्रीडेटर मिसाइल भी यहाँ पे देखने को मिल रही है. काफी बार ऐसे कहीं ना कहीं इफेक्टिव फाइट्स हमें देखने को मिली है. बट अभी के लिए अगर बात करी जाए, वेट काफी ज्यादा हो रहा है फिलहाल. वी आर जस्ट वेटिंग टू सी व्हाट विल हैपन, how the match gets started, which is the player who is going to join for T2P, and what will happen in that particular matchup. Yeah, exactly. T2P के final player का इंतजार है, and I think the player has joined, and we should be beginning with the game really soon.
can't wait for the game to begin because once again, do or die situation for Team IFM the uh, because the players have been lost. Because the players have lost the first round, they need to win this round. So yeah, T2P Formal is also here, so he should be the one who should join and start probably. But yeah, I don't know what's gonna happen. T2P versus IFM, search and destroy on firing range. Changes are being made by the teams. Enigma Ghost replacing IFM Bless once again. So let's see what's gonna happen. Well, indeed, the changes are there so that they can improve their performance and maybe put forth the carnage once again. Although T2P Infective was the one who won the first match, but moving apart, let's see what happens. Eventually, apart from that, we are going to witness a lot more of carnage. So yes, I guess the player is actually going to restart the game so that they can actually come back with the fights. So definitely, guys, we are going to go for a short break and then again we'll be back with the whole match. So definitely, guys, we are going to take a short break and then we'll be back with the match, particularly the second match of this burst of five.
I mean, all right, everybody, welcome back to the Call of Duty Mobile India Invitational Playoffs Day 2. The wait for the game is over. T2P Infective in the lobby, IFM in the lobby as well. Search and Destroy on firing range is the game that we are waiting for. We will be beginning in a couple of seconds. Everyone's ready, so no changes coming in from T2P. It looks like it's going to be the same roster, so no changes. T2P Infective versus IFM coming your way in a short second. By the way, guys, what do you think? What is going to be the score line and who's going to win? Who's going to come out on top? Do let us know in the live chat. Well, right now, I guess the carnage is about to be here anytime soon, and I believe at this moment, T2P Infective has to maintain their lead of 1-0 and go to 2-0, and then after that, 3-0 should be there. But eventually, if I talk about IFM Esports, they are going to give their all and maybe incline once again and create a, let's say, equalizing scenario. Formal and Lucid are there back in the lobby, but they are not actually ready to play the game, I believe, right now, because we are waiting for them to start. And when the match gets started, we will witness the 7 rounds. We'll witness the rounds that has to be won. It will be very amazing to watch out, no doubt in that. Such and Russia, as we all know, is a fun match, is a fun mode to actually play with. Yeah, exactly. SND, always a tactical game, always a fun game, and you really enjoy how all of it works out in just the 2 minutes that people have to plant the bomb, to make the rotations, to do everything. So yeah, really interesting to see how all of this is gonna work out. Waiting for everyone to ready up, and everyone is ready up. We should be heading into the game. Such is one firing range coming your way, guys. Lobby is created, the match has been hosted, and we are in for a treat. Indeed, we are, just because these teams are actually trying to showcase their best. And from T2P, it's going to be Beer, Progressive, Lucid, Former, and the other guy. Because, okay, I guess that's going to be Pianist and Formal. Well, of course, waiting for the Formal to be back in the lobby. And once again, the game gets connected. I believe we are going to witness the 15-second timer. And then Search and Destroy will start off from the Gorilla squad. It's going to be Candy, IFM's Natty, M, Yuzuru, and Inika Ghost for this moment. So let's see what happens. How the performance is going to get concluded is something we have to watch out. Right now, I guess the only thing IFM has to do is to just give their all out and maybe get the first victory for themselves and eventually create a buffer and create a beautiful nominating point of a 1-1 score. Yeah, exactly. They need to tie things up and they need to make sure that they are not out of this game just yet, because the loser bracket is a very cruel place and a very difficult place, because if they get sent down there, it's do or die for them. They'll either go through or they'll get eliminated. That's what's going to happen today as well in the losers brackets. SS Works are already out of the tournament because they forfeited. So NS official will be going through. So yeah, NS official forfeited yesterday. SS Works are forfeited today. So yeah, someone always forfeiting one of the matches. I don't know why these teams just need to be on time. You're playing such a big tournament. There's a massive prize pool. More than the prize pool, it's just the practice that you guys are going to get preparing for the future games. But I think the game is ready and set. We will have T2P playing with a man disadvantage. It is going to be a 4v5 situation. I don't think you can leave the lobby. I think it's against the rules to leave the lobby if you're connected in a 4-man squad. So yeah, I think IFM will have the advantage to start us off. And with that being said, game's underway. The game has already been started. Now, FM, well, let's see how they're going to counter this advantage particularly. Because they've got the advantage, now they just have to fulfill their skills and fulfill the glory. Moving up ahead, जैसे कि आप देख सकते हैं दिक्कतें बढ़ सकती हैं इनके लिए भी, because T2P Infective ने already एक मैच जीता हुआ है. फिलहाल they know how to play in front of this particular team, but देखते हैं किस तरीके से गेम आगे निकल पाता है. क्या IFM को सही में वो काउंटर कर पाएंगे या फिर IFM के खिलाड़ियों के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं. देखते हैं. फिलहाल Natty becomes the counter. Let's see how he's going to plant the bomb. क्या पॉसिबली यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करने वो जा सकते हैं. अभी के लिए तो फिलहाल वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. एनिक घोष की बात करी जाए, वो भी अपना एक तरह का एंगल लेके बैठे हुए हैं इस समय. हर एक तरफ से कहने के अच्छे एस्टैब्लिशमेंट जरूर से आते हुए देखेंगे. बात करी जाए बेयर की, वो वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, पास में ही है. यूजुरू की बात करी जाए, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए देखेंगे. टी2पी ने एकदम अपना एक अच्छा खासा, मैं कहूँगा, फ्लैंक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी है. उससे आगे बढ़ने की वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल यहाँ पे टारगेट में रखते हुए देखेंगे. बट यूजुरू की तरफ से पहला ब्लड निकल के आ चुका है. पियानिस को भी यहाँ पे डाउन करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है. Yes, exactly. And Bear एक बहुत ही sneaky position में मैं कहूँगा. Candy mid map, Pianist in front of him, and Candy is gonna win that fight. Peaks and challenges and wins that fight easily. Yuzuru inside of Trailer and IFM की टीम यहाँ पे I think पहला राउंड लेके निकल जाएगी बहुत ही आसानी से. 2v5 का situation है. T2P Bear will push, gets dropped by Candy. Yuzuru shuts down Lucid, and with that being said, 0-1 lead favoring the team of IFM. A tough one. Let's see what happens.
already in the favor of Team T2P. The game was actually the first match was in the favor of Team T2P Infective, but right now when the second match started, it all goes in the favor of Team IFM. The way they are forming it out is absolutely amazing. M की बात करी जाए स्पेसिफिकली वो अपना कहीं ना कहीं अच्छा गति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय. देखते ही देखते हैं अब प्रोग्रेसिव को डाउन किया जाएगा, बेयर को डाउन कर दिया जाएगा. लूसिड के लिए भी मैच काफी ज्यादा खतरनाक निकल के आता हुआ दिख रहा है. नीचे लूसिड आके एक उम्मीदवार देखने को मिलेंगे. पॉवर की कमी इस मैच में सबको खलने वाली है. जो मैन पावर की कमी हमें पहले राउंड के अंदर भी देखने को मिली थी, वही चीज है. नीचे देखते देखते दूसरा भी राउंड यहाँ पे जीत चुकी है फिलहाल हमारी गोरिल्ला स्क्वाड, यानी कि आईएफएम की स्क्वाड आगे बढ़ती हुई दिखेगी. आईएफएम की स्क्वाड इस समय लगातार उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है. पहला मैच इस तरीके से निकल के आया था जहाँ पे टॉप के एक प्लेयर प्रेजेंट नहीं थे एंड उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा वाइटलिटी के सामने. कुछ वैसा ही अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिलहाल, because despite of having a beautiful lead in the leaderboard in the best of 5, T2P Infective अभी के लिए यहाँ पे वो अपने गन गेम नहीं दर्शा पा रहे हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं. हालांकि वो अभी के लिए डिफेंडर का जॉब थोड़ा सा स्टार्टिंग मोमेंट्स के लिए आसान होता है. लास्ट राउंड में जब बॉम्ब प्लांट हो जाता है तब उसके लिए जरूर सा प्रेशर होता है, बट बिफोर दैट प्रेशर इज नॉट देयर. आप देखिए कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया निकल के आ रही है इस समय. मानना पड़ेगा कुछ अच्छे पिक्स निकल के आते हुए दिखे, लेकिन देखते ही देखते बॉम्ब प्लांटर जो थे फिलहाल उनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा. यूजुरा कैंडी यहाँ पे जरूर से प्रेजेंट है, बट यूजुरा की बात करी जाए बैक साइड पे यहाँ पे गए स्लाइड होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. वन मोर स्प्रे कम्स इन, डेफिनेटली अ टफ वन फॉर देम क्योंकि दैट्स फाउंडेशन देखने को मिली. यूजीरो को भी यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा. इसी के साथ एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद है जिनका नाम है कैंडी, वो यहाँ पे प्रेजेंट है. कैंडी यहाँ पे स्पॉट करने के लिए गए, एक स्प्रे बहुत ही बढ़िया डबल किल यहाँ पे निकल के आते हुए दिखेगी. इट्स अ 1v2 टाइप ऑफ सिचुएशन कमिंग अप, और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कैंडी के लिए थोड़ी सी आसान चीज होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे मैन पावर की शुरुआत से ही कमी थी. अब दो खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया तो अब बचे ही हैं सिर्फ दो, बट द अटैकर हैज टू गेट द बॉम्ब एंड प्लांट इट एज वेल. यस एग्जैक्टली, बॉम्ब भी पिकअप करना है, प्लांट भी करना है. तो एज इफ राइट नाउ कैंडी 2 kills निकाल के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर से रहेगा. कनेक्टर के आसपास ही बॉम्ब है या फिर आई थिंक टायर्स इज वेयर द बॉम्ब इज ड्रॉप्ड और समवेयर इन कनेक्टर. आई एम नॉट श्योर. यप, टायर्स bomb has been dropped. I think he'll get an easy kill. He's gonna spot Pianist, so he's expecting him to push, but Pianist is not gonna push. And Candy seems struggling. He's gonna struggle, and yeah, he's gonna get taken down as well. Pianist speaks at the right moment, takes the fight, wins the fight, and seals the round for his team 1-2. IFM, can they bounce back from that round, and can the team of T2P continue the last round? Interesting. A beautiful comeback coming from the team known as T2P Infective. Let's see how they're going to move through this. The comeback is there, but how far they can actually go with this kind of consistency is the biggest question. M gets taken down. That's a beautiful equalizer coming up, but Progressive also gets taken down at the same exact moment. Apart from that, Yuzura is not looking that sharp. Yuzura manages to take one more down. That's going to be Beer. Pianist also gets taken down. It's all about Lucid right now. He's the only player surviving from the team, particularly. I think the fourth round to be precise is going to be in the favor of IFM, because the way they are performing, the way they are actually trying to prove themselves is absolutely amazing. Their people get spotted, get shot from the both of the angle, from the left, right, and left, and just like that, fourth round also in the favor of Team IFM Esports. This could be the one where IFM Esports is going to equalize the lead. Yes, this can be where IFM Esports get the upper hand, because already have the upper hand in the game mode of SND. Now they just need to win 4 more rounds and they will have tied things up. They have the upper hand and they find this round as well. I think Pianist is going to get spotted. He's going to peek. Yep, wins the fight. Yuzuru trying to find one more going to progressive, and he is going to do that. Crick 6 does not miss that often. Beautiful shots coming out of T2P there present mid map. M is going to shut him down, and with that being said, IFM 1-4. 5 rounds are done. 4 favoring IFM, 1 favoring the team of T2P. Last round before sides flip, and I think IFM can close this round out as well pretty easily. वेल शुरुआत तो काफ़ी अच्छी कर दी यहाँ पे आईएफएम ने, और ये मैच लग रहा है कि आईएफएम के हाथ चढ़ सकता है और इजीली आईएफएम यहाँ पे इस मैच को अपना नाम कर सकती है. बट पियानिस्ट को देखो डाउन किया जाएगा एम की तरफ से. दैट वाज अ ब्यूटीफुल लोकल शॉट कमिंग अप. डेल के 33 का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. वन मोर टेक डाउन कुड हैव बीन डिलीवर्ड, बट वो टेक डाउन अभी देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है. हालांकि एनिमे घोष की बात करें चाहे वो भी टेक डाउन होते हुए देखेंगे, बट लुक एट दैट स्वीट स्पॉट. एम हिट्स एंड जस्ट लाइक दैट बैक टू बैक यहाँ पे राउंड जीतने की पूरी जो एक स्ट्रीक है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब, लेकिन साइड स्विच हो चुकी है. अब अटैकर हमारे वो खिलाड़ी है जिनके पास ऑलरेडी मैन पावर नहीं है. दैट मींस the trouble awaits. Yes, exactly, because now not only do they plant the bomb but also get these kills. First they just had to defend the sides, but now they also have to plant the bomb, then defend the side, and then get these kills as well. It's just gonna start get that much more difficult for these guys, and they do have control over onto the A bomb side, but the retake is gonna be very easy because it's already a 5v4 situation. Yuzuru is gonna make it a 5v3 situation. Bomb's gonna get planted. I'm missing out on the first shot. Bomb is gonna go down easily, but can they survive? That's the question. Lucid on bombs, that's gonna be grenade. That's gonna push Lucid out of that situation, or probably Krim does not connect. I thought that mate should have connected, but with that being said, IFM having the man advantage, having the numbers advantage, they can probably go for the defuse.
and close this round out as well. Indeed, some beautiful shots. 50 GS is here in front of us, and you can already see the bomb has been defused. And finally, defender goes in to bag their sixth victory. Now, moving up ahead, one more match to go, one more round to go, and this could be the match where definitely the comeback of IFM is there. But one more thing has to be considered, that guys T2P is here with the four-man power. Will it be the control mode where the things might actually change for Team IFM Esports, or is it going to be the consistent performance of IFM Esports? We'll check it out, but right now, needs, shots, snipers, AR, हर चीज का यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं लगातार शॉट्स लिए जा रहे हैं, क्रिक सिक्स का इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। यूजरों की तरफ से एक नीड यहाँ पे देखने को मिला, बुशेटे हाथ में देखने को मिलने वाली है। आगे क्रिक सिक्स लेके बढ़ते हुए दिखेंगे। क्रिक सिक्स अपने आप में ही कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट मेटा प्रूव कर देती है, बट मूविंग अप अहेड देखते हैं क्या स्टैंडर्ड्स निकल के आ पाते हैं। स्प्रे दिए ट्रॉफी सिस्टम को फोड़ेंगे सो दैट उनको दिक्कत ना हो उस चीज से। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी यहाँ पे देखिए लूसिड उनके जो टीममेट है वो इस राउंड के अंदर स्पेसिफिकली अब आने वाले जितने भी राउंड यहाँ पे होंगे, अगर ये राउंड वो जीत भी जाते हैं तो भी काफी अलर्ट होकर खेलेंगे, बिकॉज जानते हैं कि ज्यादा उनके पास अब बफर एरिया बचा नहीं है। दे जस्ट हैव टू गेन द पॉइंट्स। बियर की तरफ से यूजर को टेक डाउन यहाँ पे कर दिया जाएगा, विच इज गुड इनफ। बियर यहाँ पे है, प्रोग्रेसिव है, लूसिड है, साथ ही साथ पियानिस्ट की बात करें जाए 100% है, बट एक और शॉट प्रोग्रेसिव का, एक और अमेजिंग टेक डाउन। एनिग्मा गोस्ट को भी टेक डाउन करेंगे। Well, that's a great comeback coming from the corner. एक अच्छा खासा decent Oh, comeback देखने को मिल रहा है, but M की तरफ से again the things are changing. Finally, it's a 1v2. Let's see what happens eventually. Lucid, well, goes in for the bomb plantation. yes, exactly. And Natty all alone in a 1v2 situation, up against Progressive and Lucid. Can he find the two kills? Natty is gonna find the first in a 1v1 situation right now. Backs out of trigger immediately. A bomb head glitch for last banda available. What is Natty gonna do? Is he gonna try to push from trailer? Is he trying to push from A long? Looks like he's gonna rotate armory and try to push from top. He's gonna find Lucid off guard and he's gonna get the easy kill. And with that being said, IFM secure this round, win 1-7, and close this one out in their favor as well. Well, what a beautiful gun game coming from IFM, and now the score is going to be 1-1 in the best of 5. That means two more good matches. We have to see what will happen in that particular perspective as well. But no doubt, the connections, the fights, the brutalities are actually being on very on point. We are waiting for the source to actually come up in front of us. But apart from that, guys, as you saw, this is a match where we expected a comeback from IFM Esports and we got it delivered. But yes, द थिंग इज मैन पावर नहीं थी वहाँ पे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के लेके चली गई। लेकिन चलिए स्कोर्स की बात कर ली जाए। लेट्स टॉक अबाउट द स्कोर्स एज वेल। मीनवाइल व्हेन इट कम्स टू द स्कोर, एज यू कैन सी प्रोग्रेसिव वाज द एमवीपी विद द 4 किल्स फॉर द टीम नोन एज T2P Infective, if I'm not wrong। अगर वही अगर बात करी जाए कैंडी की, जो कि आईएफएम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ पे स्कोर 1100 का लेके आगे बढ़ते हुए दिखे। 10 किल भी उन्होंने करी, एक प्लांटेशन भी देखने को मिला। और डिफ्यूजन की बात करी जाए तो नाटी और घोस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया उधर। Yes, exactly. Natty and Ghost playing the team game. Yuzuru with 9 kills, Natty with 3, Enigma Ghost with 3 as well. And yeah, with that being said, it's going to shift to control on raid. Uh, it's going to be a game which both the teams need to win because whoever wins will take the lead. IFM have tied things up. Maybe it's the start of the comeback. Maybe they are going to end this 3-1, or maybe we're going to see another 2-1 in favor of the team of T2P Infective. Anything can happen. Sides are gonna flip. IFM is gonna be on the red side. So yeah, let's see what's gonna happen next game. Indeed, indeed. The next game is going to be very amazing to watch out, just because the next game is going to conclude that how the fights will actually move forward. Is it going to be IFM Esports or is it going to be T2P Infective, which is going to lead the charts? Yeah, exactly. IFM, they need to win this one to extend their lead and show that it was just not mere luck, but the fight in them that wants to win. But yeah, T2P Infective having a little bit of disadvantage already. They have all their players ready up, control raid, everyone's ready. We are ready. Let's get this game underway. But as I say that, T2P Bear just decides that, you know what, I want some more time off. So does Candy. Control on rate coming soon, guys. It's going to be a good game because capturing these points gets really difficult because these points are absolutely opposite to each other. And the first easy point I would say would be on to the A side because you have a lot of cover to play with. You can spend a few lives over there and then focus on to pool side because pool is very open, very difficult to capture that point. So that should be the last priority of these teams. But yeah, it's going to be IFM is going to be on the aggressive side first. So let's see what's going to happen. Well, we have to check out that how they're going to build up the game. If I talk about T2P, they are also trying their level best to attain some good points. In the last match, they lost it just because of the manpower was not there. Right now, T2P Beer and Progressive has to just push that ready button so that we can start off the match and eventually see what happens.
how the carnage is going to focus. Remember, guys, round pin limit is going to be 3. Round time limit for every single round is going to be 90 seconds. And apart from that, there is a beautiful giveaway going on for you guys, both on YT and Instagram as well. And apart from that, Discord is actually having its another giveaway. So go ahead and check out the details that are being given in the description of this live chat, description of the stream as well. On the Instagram handle, you have to go ahead and follow the Call of Duty Mobile India official page. And with that, you have to check out the giveaway post and like it, share it on your story along with tagging with your 3 teammates or friends, whatever you want to go with. But yeah, of course, guys, that can easily help you to get the giveaway. And in the giveaway, we have, if I'm not wrong, Legendary Lama or the Messi bundle. So definitely a win-win situation for you guys. Yeah, exactly. It's a win-win situation, and I'm in T2P, guys. If you are seeing this live by any chance, guys, please just ready up. We can't wait for these games to start. The audience can't wait, and yeah, as I say that, we are all ready. We are set. We are heading into the game. T2P versus IFM. Once again, game number 3 coming your way. This is for the lead of the series. T2P had the lead in the start, but lost it. IFM tied things up. 1-1 now in the game of SND. But yeah, it looks like that IFM does not have a member who's connected right now. Yep, everyone's here. 15 seconds left before the game begins. The roster's in front of you guys. Not a lot of changes. Bless comes back in, I guess. Yep, Bless comes back in, and yeah, Enigma goes stays. T2P versus IFM underway. The carnage has started. The fight is actually coming up. 30-30 eliminations. Both of them are trying their level best to go with. And apart from that, A side is there, B side is there. I believe A side is actually going to be the side which is going to get favored most because B or the 2 actually compete. But right now, the competition avails in the P1. As you can see in the P side, the shots are coming up for sure. If I talk about this particular team known as IFM, they're trying to get it in their favor. But is it possible? You have to check it out. Oh, that spray was absolutely on point. Yeah, exactly. A very beautiful spray. They're gonna get the lives advantage as well, and they're gonna get 2 ticks of progress done before anyone from the team of T2P can make any sort of dent over here. 2 ticks done. The 3rd tick will be coming in very shortly. T2P need to find a couple of kills. Yuzuru getting Pianist. That's just gonna make things that much more difficult for the side of T2P Infective. IFM finding the kills that they need to, and yeah, with that being said, they have captured B very early. So with 2 minutes left on the clock, they can play the clock really well. Convert into a TDM also if they want because they have the lives advantage. A 9 life difference right now in the favor of the team of IFM. Yuzuru is gonna get spotted, gets gunned down, and with that being said, IFM so far looking very strong. Well, indeed, they are actually looking quite strong and comfortable at this moment because they've got the right amount of eliminations in the favor, but now they're going to capture the A side. Is it possible? Yes, of course. The way they are actually trying to synergize the game is absolutely looking great. T2P Infective after the loss in the first match. In the second match, to be honest, the game is getting shattered as you all can see. But 21 eliminations from the team IFM Esports. They're actually trying to level to capture the A point. They're getting the backlash. They're receiving the backlash. But look at that. I believe the game will go down for T2P Infective in terms of kills because they're underway. Look at that. Kills नहीं है उनके पास. फिलहाल एलिमिनेशंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे. 5 ही एलिमिनेशंस और अगर निकल के आ गए लीजिए अब तो 4 हो चुका है फिलहाल तो स्कोर कार्ड. अगर 4 और एलिमिनेशंस यहाँ पे होते हैं तो फिलहाल टीम T2P Infective पहला राउंड यहाँ पे जो है फिर अगर होगा वो हारती हुई दिखेगी और लग रहा है कहीं ना कहीं तो बहुत ही इजीली यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल देखने को मिल रहा है. यूजरों की स्पेसिफिकली बात करिए उनको भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा. एंड फाइनली 2 more to go इज बियर एंड पियानिस्ट. और रिमेंबर गाइस यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा. अब जो खिलाड़ी आखिरी बचे हैं इस एलिमिनेशन के लिए वो है पियानिस्ट. So all of the game falls in the hands of Pianist, but the round goes in the favor of IFM with a beautiful win in this particular round as well. I guess the motivation is on Roops. Yes, exactly. I mean, it was a very dominating win, I would say, with a life advantage of almost 10 lives. Really amazing, really well played by them. And now they're going to be on the defensive side, so they can control the pace of the game. They can just wait this one out, just farm kills, let the first point go, and then focus all their manpower onto the next point. Early operator being used will not get any value, will just get some sort of information, and yeah, the push is coming through, the setup is there. I think A is going to be the side that is going to get favored from the team of T2P, but IFM defense just very strong at this point. Out they're going to send everybody right back to spawn. Again, the push is coming up. This is the second round. Well, of course, IFM has to actually continue devouring in this particular favor. बट अगर बात करें जाए T2P Infective की तो यहाँ पे बस पॉइंट उठाने किसी भी तरीके से सर्वाइव करना है. अगर वो सर्वाइव कर ले जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. अभी के लिए बी साइड जो है फिलहाल उसे कैप्चर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करती हुई दिखेगी टीम T2P Infective की स्पॉट पर कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी. दैट्स व्हाट वी हैव टू चेक आउट राइट नाउ. एलिमिनेशंस के मामले में फिर से IFM आपको एक अच्छी लीड के साथ देखने को मिल रही है. IFM की तरफ से बहुत ही अच्छा खासा कड़ा कॉम्पिटिशन
सीन देखने को मिल रहा है, बट लीजिए प्रोग्रेसिव का एक शानदार सीबीआर फोर्स प्ले और देखिए देखिए उन्होंने टेक डाउन करो से क्या फॉर्मूल की बात है, चेक रिक्स का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है कैंडी की तरफ से। एनिमा घोस्ट वंस अगेन एक अच्छा टेक डाउन यहाँ पे करते हुए दिखेंगे, एनिमा घोस्ट इस मैच के अंदर काफी कारगर साबित होते हुए दिखेंगे फिलहाल। फॉर द मोमेंट 5 किल वो कर चुके हैं, कैंडी की तरफ से 12 किल ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली अगर बात करें जो एफएम की स्पेसिफिकली, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से किल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, वो लगातार एग्रेसिव निकल के आ रहा है। अब देखिए वॉल बैंक का भी इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। यस एग्जैक्टली, बट मिड मैप पे बेयर अभी आ जाएंगे और वो भी टेक डाउन हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब he's gonna get shut down, he's gonna get eliminated. T2P formal inside the point is gonna get shut down. IFM, they need to find just a few more kills, just hold them off the point for 7 seconds. अगर यहाँ पे अगर अगर कैप कर लिया तो बहुत ही बड़ी बात होगी। स्टारों का यूज तो देखने मिलेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 किल जरूर से निकाल लिए, 3 किल निकाल लिए तो बहुत ही अच्छे। बट इनिग्मा मोस्ट फाइनली कम्स अप, kills his opponent with 7 seconds left on the clock. No one is out of the hardpoint. Well, wait, someone is inside of the point here, but what beautiful shot coming in from Bless. And with that being said, I guess that's all he wrote until unless Pianist can get inside the point. He won't be getting inside of the point. Finally, oh, they just getting back inside the point. So yeah, they are still fighting. It's a 6v8 situation, 5v8 Oh, situation now. time. IFM are gonna let this one go. 1 minute left on the clock. Can the team of T2P Infective make a comeback? I don't think it's gonna be possible. It is a 4v7 situation now, a 3v7 situation, and yeah, this is just not gonna happen. M with the kills, IFM with the kills, 2 players left. It's gonna be Lucid and Formal. Lucid is gonna get shut down, and last guy alive is gonna be Formal. And indeed, Forman is trying his level best to secure some good points and eventually maybe get the 6 kills in his favor. But I don't think so. It's gonna be that easy, because look at that in front of him on the top of this guy particularly. Well, he gets spotted. The revenge has been taken. Zero pops him out with a beautiful headshot, and just like that, now the sides have been switched. And as you can see, still IFM Esports is at the lead. Yeah, exactly. IFM Esports leading almost everyone in double digits except Enigma Ghost. He's still with 8 kills, but yeah, hasn't used his operator yet, so maybe that is the difference. Everyone else probably has used their operators. Only Zuru doesn't use his operator. So yeah, they must be saving their operators for the final round, and now is when the operators might just come out, and IFM once again are trying to make some early noise, trying to make some early pressure. He's gonna get pushed from behind, and Ghost wins that fight very easily. As you can see, he's gonna get pushed from the left side, and Formal is gonna win that fight. But IFM tied things up in the lives department for now. T2P Infective getting kills as well. But can they keep this going? Because the last time this turned out, it was a very easy win for IFM. But now, T2P Infective have balanced things out. But Enigma goes finding that kill. It's going to be that much more difficult for his opponents. Well, bouncing back is not going to be that easy for them. Yuzuru is just partially being quite chaotic. Look at that. Deal was taken down from his corner. Apart from that, Progressive managed to take down Yuzuru, the beautiful drone to Predator missile kill. It was important to be precise. If Yuzuru would have not been taken down, I guess he can easily do a lot more damage than this. Moving up ahead on the other corner, as well can see Bliss with the DLQ-33. He's trying his level best to killing some good shots, failing to do so, but still he's trying it at the best. Apart from that, Yeah, exactly. He's getting very, Indeed. very up close and personal with his opponents using a sniper in response. Well, he's not really performing like Pepe performs in response. He's just an absolute menace. But yeah, he's playing his part as well. But with that being said, IFM are gonna get the B point captured and a minute and 40 left onto the clock. Now they just need to get the A flag captured, but they can just go for kills as well. They have the 7 lives advantage right now. Yuzuru M is gonna find one more kill. Yuzuru does not look at the peak, my friend. How do you not see that guy standing over there? That could have been an easy kill for you, but he just didn't look in well enough. Giannis is gonna get shut down now. 5v14 situation. Enigma Ghost is gonna make it a 4v14 situation. Formal is gonna push it. Formal is gonna win the fight, but I think this is all said and done. IFM is gonna walk out with this round as well. And 11 to 3, they will have the lead in their favor, and they will have a lead in the series as well. 2-1. Well, now the lead is actually about to be in the favor of Team IFM Esports. They're absolutely going to cherish it for sure. Apart from that, one more kill, one more takedown, Lucid on the backward with the prize with gloves. He's just trying his level best to move forward, have a beautiful area to actually play with, have a beautiful angle to actually play with. And yes, of course, Yazuru gets connected, Yazuru gets finished off. Apart from that, now his position is pretty much visible. It's going to be a tough one for him to do a 1v9 to be honest, but there we go. Finally gets taken down. A side was also about to get compromised. So definitely the game is over for Team T2P Infective. Back-to-back 2 matches have been out of the equation for Team T2P Infective. The first one, the hard point was in their favor, but after that, as you can see, the game is being changed and the fights are actually being changed at this moment. But according to the veto, now we are going to witness one more beautiful match that can actually sum up the game if Team IFM Esports is going to go
and bag this one. This is going to be hard point in the standoff, and we all know if IFM tries to actually deliver, this is going to be a tough one because remember, guys, in the previous hard point, it was Team T2P Infective who won. Yeah, exactly. Team T2P Infective did win, but IFM just proving to be better at this point of time. They have made a beautiful comeback. Yuzuru with 12 kills, Candy with 23, M with 19, Enigma Ghost with 12, and Bless with 16 kills as well. Double KD coming from Bless with that sniper. Really well played. Progressive with 18 kills, Pianist with 14, Bear with 11, and Lucid with 10 kills as well. Indeed, a beautiful performance, no doubt on that. Moving up ahead, these were the match details. Now we are waiting for the next one to start. Waiting for the next match, which is precisely going to be the hard point in the map of Sandog, where IFM is going to sit in the blue corner. And when it comes to the team T2P, let's see what happens in their place as well. And coming up, I guess again the players are not ready right now from the team known as T2P Infective. We are just waiting that once they are back in the lobby, we are going to start the particular match, and we'll see what will happen. Yeah, I don't know what's happening with T2P, but they need to be ready quickly. We've given them enough Exactly. time, and but yeah, I don't know what's happening. IFM is waiting in the lobby, and T2P is not there, and I don't know why everyone from T2P just keeps leaving the lobby. Not sure what's gonna happen. I think they're gonna forfeit or something. I'm not sure what's happening because everyone has left. IFM has left. T2P has left. We have no clue. We will give you guys an update really soon. But yeah, I'm not sure what's happening at this point of time. And indeed, guys, I guess let's take a short break, and after the break, we'll get you Yeah, the it's an update. FF. It's an FF. Okay. FF from the side of T2P Infective. T2P Infective have FF, which means IFM will be going ahead in the brackets. Oh, indeed. Well, that's great for Team IFM. They are going to move up. They are going to move up to in the finals and face off the other team, which is known as Vitality. So definitely, there the battle is going to be quite auspicious. Yeah, exactly. And with that being said, guys, we'll be taking a very short break before the next match begins. And we will be right back with Team Godlike Esports versus Revenant. I think that is the only match left for today. And we will be right back with that game. So don't go anywhere. Share the stream, like the stream, and subscribe if you're new.
Welcome aboard once again, guys. We are back again with another beautiful bang. This is going to be the battle between two giants. That's Revenant versus Godlike Esports. What's your opinion on it, Lilibet? As of right now, we've just got the news that these guys are playing a tournament and RNT beat got like 3-1 वहाँ पे तो Oh. RNT does have the momentum. So back-to-back games होंगे इनके best of 5 के. It's going to be really interesting to see can the team of Godlike avenge their previous game, and because they are in the lower brackets now, so they need to make a massive comeback, which they are known for. But yes, they've just lost to RNT in another tournament 3-1. So let's see what's gonna happen, because it's gonna be an action-packed game. That's what I can tell you so far. But yeah, let's Mm-hmm. quickly have a look at the prize pool once again, Raider. Well, definitely, guys. If we talk about the prize pool, well, the stakes are high. 1 lakh Codm points. Rank 1 will get you 30,000 CP. Rank 2 will get you 20,000 CP. Rank 3 and 4 is going to get 12,000 CP. Accordingly, rank 6, rank 5 to 8 is going to get you 6,000 CP as well. Apart from that, when it comes to the MVP, it is going to get you 2,000 CP. But apart from that, let's talk about the brackets. Let's talk about the things which are going to matter a lot. Well, according to the brackets, as you can see, we had a beautiful match. It all started off with Vitality winning the one and eventually being in the finals. And after that, it was IFM Esports bagging their vacancy in the finals. But now we are going to move to the lower bracket round number one. Revenant Esports versus Godlike Esports is going to happen really very soon. And the winner is going to face off T2P Infective in the lower bracket round two. But apart from that, if I talk about the match number four, which was bound to happen, well, SX Verxsa has already forfeited that particular match, and NS Official is going to face off the team known as Top Esports. Yeah, exactly. And we are in the final few stages now. And before we go ahead, let's just announce the winners of the giveaway. So day two winners on your screen right now. It's gonna be Joel underscore 231 on Instagram and Mm-hmm. Urban on YouTube. So guys, make sure you all DM a mod in the Discord server or connect with us on our Instagram pages, and make sure that you guys respond as soon as you can to claim your awards. And yeah, with that being said, we are going to go ahead and Godlike versus Revenant Esports really soon. The match is going to begin in a couple of seconds' time. The players are joining the lobby. Everybody is ready. We are ready, and I can't wait for this game to get underway. Oh, indeed. We are waiting for the match to get started. As soon as the match gets started, we'll see the carnage coming up between these two giants. Huge fight has to be ever. And as you said, Elevate, that Revenant won the 3-1. And now moving up ahead, I guess Godlike has to come up with some good new strategies so that they can avenge their particular fight. But now waiting for the match to get started, I believe once again, the guys from Team Revenant are not here in the lobby. Once again, when the guys from Team Revenant are going to be back. Okay, I guess that's Godlike, which is actually missing a player. So as soon as the players are going to come in, we are going to witness the match. We are going to witness the chaos. I'm hoping for a good competition, to be honest. But let's see what happens. Yeah, exactly. I mean, Godlike Vitality was really amazing to watch, and now it's time for Godlike versus RNT. Hopefully, this match delivers up to the expectations as well, because it's already delivered in one tournament. Now, can it deliver in the second tournament as well? I'm hoping for another close game. I'm hoping that it goes down to the wire once again. And yeah, with that being said, we should be starting very soon. Revenant has joined, Godlike has joined. We are ready, and let's head right into the game. Indeed, waiting for the call to get started, waiting for the match to get started right now. Well, it's again, if the match gets started, we'll see how the game is going to go on, how the playoffs are actually going to take off in this particular scenario. Remember, guys, this is lower bracket round number one. Revenant Master, Bones, and Trunks have to ready the game, and then we are going to witness the carnage soon enough. Well, once again, we are waiting. As soon as the ready green markers are going to be there, the match will be started, and Master is the only one left, I guess, left behind, and Vegas was also there as well. Now it's all about Massa. He has to ready it up. And remember, guys, this is going to be hard point. The map is going to be slums. Round score limit is going to be 250 and time limit is 10 minutes. Yeah, exactly. It's gonna be a tough one. This is the game where Godlike lost yesterday as well against Vitality. They lost a very close game. They tried to make Uh-huh. a comeback, but it was just a little bit too late. Now, can Revenant Esports repeat what they've already done in the previous tournament, or will Godlike come back and answer strong and avenge the loss which they've suffered back to back now? One against Vitality and one against Revenant. So Godlike struggling a little bit, but let's see what's gonna happen. Are they gonna make their infamous comeback from the lower brackets as they do all the time, as they're known to do Yeah. all the time? So it's just Mhm. gonna be a matter of time before we find out. Well, indeed, it is going to take a short while before the match gets started. And once the match gets started, I believe we are going to witness the carnage really soon, I guess, from the team. Oh, the match has already been started. That's absolutely amazing. From Revenant, it's going to be Zyro, Abyss, Bones, Master, and the other guy is going to be Hellfire, I guess. Well, of course, there is some changes from Team Revenant, but let's see how Revenant is going to outperform. 10 seconds more to go. After that, the match will get concluded.
From Godlike, it's going to be Learn, Burns, Neutrino, Trunks, and Vegas, the OG squad, which has never changes and now looking to actually change. But I believe, yes, of course, the contestment is actually going to be for real. This is the match where maybe Godlike can actually bounce back, or is it going to be Revenant once again, performing the same meta that they did in the previous tournament? Exactly, and Bones getting the first pick, and Godlike also starting to get a couple of picks. Holger being used by Neutrino, so yeah, heavy LFP being brought in, and Godlike onto the point early. They're gonna start racking up these first few early points. If the pre-fire is gonna come on through, Vegas inside of the point, Trunks inside of the point as well. Godlike Esports trying to establish some sort of map presence, and they have that right now. Neutral just needs to hold on to this angle. He's gonna see people coming in from front, gonna reposition, and he's gonna continue that challenge. Just not want that opponent to cut loose and get free, and that's exactly what's gonna happen. Bones cuts loose and gets free over there because of the smoke. He's gonna try to find an angle to Neutral, but Neutral is laying down prone. He's on a couple of shots. Backs off. Gonna be an easy kill onto Trunks, but no, Trunks gets that pick. Vegas gets the pick as well. And the trades from Revenant also starting to go in. Trunks, can he find one more? Yes, he does. Has another guy right around the corner. He's gonna come in with this spray. Has to reload, unfortunately. And now rotationist connects are gonna begin. Godlike having the advantage on the first guy is gonna be the first man in line of defense. Falls, and now Trunks going for the spawns. Already the first point is already done, and Godlike is the one who cherished a lot. To look at that pretty amazing burns coming from Godlike. Now they're actually moving over the second hard point. They're trying to capitalize this as soon as it is possible. There we go. Already the capitalization is done. Look at that. Oh, that was an amazing nade kill coming from Burns corner. It was absolutely massive. Apart from that, the vehicle blockade is also coming up. Team Revenant, I don't know what is happening to them, but right now Revenant is not looking as sharp as they were looking a few moments earlier. But now, look at the bounce back coming up from Team Revenant. Finally, they are having the hard point. Finally, they are raking the points. Is it going to be enough? Well, I hope so, but I really doubt it. Oh, passer from the backfoot managed to devour the team known as Godlike Esports. And once again, Godlike is at the backfoot. Hard point is in the favor of Team Revenant. They are completely trying to be chaotic. Trunks की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली देखिए फाइनली उन्होंने हार्ड पॉइंट को होल्ड करने की कोशिश करी और इस समय रेवेनेंट के धुरंधर खिलाड़ियों को ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करी जा रही है कुछ खास सक्सेस तो मिला नहीं है बट इस समय 60 पॉइंट के साथ आगे निकलते देखेंगे टीम रेवेनेंट के प्लेयर जहां नीट डाला वहां इनके टीममेट्स को भी प्रेजेंट देखने को मिले थे हार्ड पॉइंट को ओन किया एक सक्सेसफुल वे में गेम को आगे निकालते हुए देखेंगे बट चलिए देखते हैं अगला हार्ड पॉइंट में कितना ज्यादा पॉइंट्स को अपने लिए उठा पाएंगे फिलहाल करेंटली गॉडलाइक और रेवेनेंट दोनों का ही एम होने वाला है कि क्यों ना अगला हार्ड पॉइंट होल्ड किया जाए लेकिन देखिए उस चीज में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हमें देखने को मिल रही है टीम रेवेनेंट ऑलरेडी यहाँ पे हार्ड पॉइंट को होल्ड करते हुए दिखेगी उनके दो तीन खिलाड़ी बहुत ज्यादा करीब है और बाकी जो बचे हैं वो फिलहाल एक एरिया को एंगल्फ करना चाह रहे हैं एक एंगल को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे बट फ्रॉम द स्टार्ट लीजिए कोशिश थी हार्ड पॉइंट को होल्ड करने की बट वो कोशिश को नेग्लेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा टेक डाउन किया जाएगा रेवेनेंट के खिलाड़ियों को बट स्टिल रेवेनेंट इज हैविंग द हार्ड पॉइंट barely surviving at this moment. Let's see what happens eventually. Yeah, exactly. Godlike trying to push forward, and they have been able to push forward. They have been able to send some of Revenant members back to spawn. But if they want to make a move, they have to make it now because jitna wait karenge, the reinforcements are going to start cutting in. A beautiful little kill comes on through, and Godlike finally pushing through. Learn getting a couple of kills with the Annihilator. Sparrow is going to be in use as well. But I don't think the Sparrow is going to bring a lot of value. Gets one kill, and that's going to be all that the Sparrow wrote. Trunks getting one kill as well, and now they're inside the hard point. They're going to start racking up these points. 20 seconds left on the clock. That's going to be easy 20 points, but I don't know who this guy is with the streamer mode. He's also getting a couple of kills with the Annihilator. Gets straight off with the grenade. Beautiful nade coming in from Neutrino. Nice little side angle. Trunks is getting the final kill, and with that being said, Godlike crossed the 100-point mark. Well, in this particular invitationals, as you can see, moving to the semi-finale, Godlike is actually ravaging. They are trying their level best to gain some good points, and look at that, the comeback from this particular team is for real. 108 points, but once again, Gravity Vortex gun has been someone. Vegas is the guy who's going to move it up. Look at that, he's taking it up quite a bit. I guess the notch performance is coming from this corner, 116 points. Godlike is just moving up, gaining the points. Revenant, well, they are failing to connect the shots, but yes, of course, now the lead once again is in the hands of Team Godlike Esports. They are actually getting a lot of hard point coverage in their favor. Look at that. Another shot comes in, but Vegas gets taken on. Vegas was on the back foot. Now, if we're talking about Neutrino with that another shot, can he actually devour? You have to check it out because Fire and Claw are the two guns which have been banned. So yes, of course, ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एनालिटर और फिलहाल ग्रेविटी वॉर्टेक्स गन या फिर अगर बात करी जाए कुछ और ऐसी गन्स का इस्तेमाल करके कुछ उसके पॉइंट्स उठा पाएंगे न्यूट्रिनो काफी सक्सेसफुली डबल किल यहाँ पे निकाल के लेके जा चुके हैं एंड दैट वाज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दैट लुक एट दैट प्रीडेटर मिसाइल किल वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी और देखते ही देखते फिर भी अभी गॉडलाइक का कब्जा जो है वो हार्ड पॉइंट पे देखने को मिल रहा है 160 पॉइंट्स के आसपास का जो एरिया है वो इजीली कवर कर सकते हैं यहाँ पे लेकिन पॉइंट्स they are going to get from this hard point. Yeah, exactly. Now the second set of rotations are gonna begin, and this is where we've seen Godlike struggle previously as well because पहले set of rotations तो आराम से निकाल लेते हैं, but second set of rotations थोड़ा struggle करते जरूर से नजर आते हैं. Now can RNT hold on? Yep, RNT have been able to move out the hard point early, and यहाँ जैसे कि मैंने कहा
Godlike जो है second set of rotation में थोड़ा struggle जरूर से करते नजर आती है, but yep, अब भी बना है hard point. It has just been established, so maybe in a couple of seconds they will make a break. But with that being said, Zyro finding 3 beautiful kills, and that's gonna ensure that the hard point is gonna stay with Revenant for the rest of the time. पर देखिए वो ट्रिपल किल्स कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रेशर में डालते हुए दिखते हैं टीम गॉडलाइक को। बट अगर वही बात करी जाए फिलहाल रेवेनेंट के प्लेयर्स की, देखिए उनकी तरफ से भी एक अच्छा कंटेस्टमेंट बहुत निकल के आ रहा है। वेगस की तरफ से भी शानदार कुछ ब्लोज देखने को मिले, एबिस को डाउन करेंगे लर्न, एंड इसी के साथ साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हुए दिखेंगे। बट अभी भी हार्ड पॉइंट का एक जो मेजर चंक है वो देखने को मिल रहा है इन द फेवर ऑफ टीम रेवेनेंट। बट कितनी देर तक वही यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। लुक एट दैट स्पॉटेशन कमिंग अप, ज़ायरो की तरफ से शानदार टेबल्स चेंज होती हुई दिख रही हैं। वेगस की बात करी जाए तो उधर अटैकिंग फॉर्मेशन जरूर से लाया है, लेकिन अब हार्ड पॉइंट यहाँ से निकलता जाएगा। वेगस एंड गॉडलाइक हैज डिसाइडेड that वो अपने अगले हार्ड पॉइंट को होल्ड करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। Learn on this one, managed to put down some good analytical shot that was amazing, but bones का हुए वो शिकार, that was a bone chilling shot to be honest. But now moving up ahead, 70+ points का यहाँ पे जो बफर है वो बनाना इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है, बिकॉज तब आप एक सिग्निफिकेंट हार्ड पॉइंट को अगर जाने की दें तो भी कहीं ना कहीं आप एक कंफर्टेबल अपरिच साइड पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और टीटी जिस तरीके से चेस कर रहे हैं फिलहाल, लग रहा है कि वो 70 पॉइंट का डिफरेंस हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और इजीली देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द स्प्रेज कमिंग फ्रॉम टीम रेवेनेंट आर नॉट स्टॉपिंग एनी। Yeah, exactly. And Revenant moves back inside of the hard point. 50 GS निकाली जरूर से neutral में, but it's just not gonna be enough. Revenant move in and they move out as well. Godlike burns and Vegas getting 3 kills. That's gonna leave one finding the 4th, Vegas finding the 5th, and that's gonna be the entire lineup sent back to spawn. And yep, Gravity Vortex is being used. Beautiful kills coming through with that operator skill as well. He's gonna get pushed. Probably should have used the final Vortex over there, but I don't know what happened. And now Godlike starting up for next kill. They can let these 20 seconds go. It won't really hurt them, but yeah, getting a full 60 on the next one is going to be essential and it's going to be key. So that's what they're going to try to do. They're going to try to hold on to the next one. They're going to let the final 20 seconds go in the favor of Team Revenant. But as I say that, Revenant have also made a break over here. So Godlike starting to struggle a little bit, but as I say that, they get 3 kills, but Bones finding the trade onto Learn, Master finding the kill onto Neutrino. Vegas stops Bones in his tracks. The trades are there, and finally Godlike has made the break onto P4 as well. So they are moving up. Indeed, they are trying their best to gain some good points. And look at that, the Gravity Vortex gun is helping them a lot with that kind of scenario. The OP skills are working, no doubt in that. But the guy gets spotted. But despite of that, the elimination of Vegas comes in. Indeed, a beautiful one, no doubt in that. Apart from that, Abyss moves in with that analyzer shot. Analyzer shot is going to be very deadly, but he has no clue that there is a guy on the back angle. But still, he managed to devour him out. And finally, the hard point is in the favor. Oh, that's a beauty kill. Oh man, that's a frenzy coming from that guy. 5 kills coming in a very short span of time. Beautifully played over there. Amazing shots, amazing kills coming through from him. The way he just played that, absolutely amazing. Made sure that his team is still in contention of the hard point and his team is still inside, and that's what he did. Really amazing use of the Annihilator, but Godlike Esports, they've already crossed 200 points, and whereas the team of Revenant haven't even reached 150 points, starting to struggle a little bit. But yeah, Godlike cannot get a little bit too comfortable because Revenant have made the comeback in the previous tournament, and Godlike need to be on their toes till the very end. Indeed, they have to, otherwise it's going to be a tough one to win. But look at that, shots are coming up. Oh, the shot was not connected. He was trying his level best. That machine has been summoned by Revenant Master. Let's see how he's going to conclude the battle with this. And eventually, as you can see, the hard point is still in the favor of Team Revenant. But finally, the hard point gets snatched away. It's going to be Team Godlike once again trying to contest it out. But apart from that, the Crixus has been summoned. Let's see how far they can actually go. The sprays are still coming up. Look at that amazing spray from Master's corner. Bison works fluently for this guy. Apart from that, 150 points. The close combat is still coming up. That's interesting. Godlike is unable to maintain the lead. They are still in a lead of 60 points. Yeah, they are in lead, but if Revenant can keep pressuring hard points like this, it won't be long before Revenant get in lead, because this hard point will get them close to 200 points. Like hard point, if they can get a goal like they did in the second set of rotations when they started, they will cross 200 points. So yeah, Godlike, they need to start finding kills. They need to start making sure that Revenant don't get a lot of time on hill, because the more time they get on hill, the closer they're gonna get to close this gap up. Godlike Esports right now struggling in mid. Trunks not able to spot anyone. Meanwhile, Revenant finding 3 kills, 4 kills. Finally, Trunks finds one, moves inside of the hard point, finds the second, can he find the third? No, Abyss cuts him down in his tracks. And with that being said, Revenant mid-map control present with them, control of hard point also present with them, and if this keeps up, they will be crossing the 200 point mark very soon. Well, indeed, the way they are performing, the way they are exceptionally trying their level best routines and good points, I believe this is going to help them a lot. Apart from that,
Revenant is catching up. Look at that, how fast they are catching up. But still, I believe Godlike can actually maintain their own kind of pace. But apart from that, a shot comes in with that another kill. Once again, the balance has been maintained. Apart from that, one more shot, 230 points. So very close to 30 points right now. Godlike may be able to win this one, but I guess Revenant is giving a one hell of a competition. Yeah, exactly. Revenant are not going down without a fight, and with that being said, they will be able to cross 200 points on this hard point itself, and already established on the next hard point. So you see things starting to get difficult for the team of Godlike. As I said, they need to be on their toes till the very end. I think they took a little bit of a breather, and now Revenant are right back into this game. Both these teams have crossed 200 point mark, 201 for the team of Revenant, 232 for Godlike. Now Godlike trying to put in the pressure, but Revenant have established themselves, and Revenant Esports hold on, because if they do, they will close things off on this hard point itself. Godlike push on through. Godlike get the kill. Gravity Vortex being used, but they are pushed right back out of that zone. Travis is going to come in with his arrow, gets shut down, gets straight off, gets sent back to spawn, and Revenant Esports making a very commendable hold over here. And if they keep this up, Godlike will start to struggle once again. And indeed, it's looking like Godlike is already struggling. Look at that, Godlike is unable to counter the fight, and now Revenant is rising. The way they are rising is absolutely looking strong. Apart from that, Zaro is trying his level best to good annihilate the shots, and yes, of course, the shots are coming. Oh, another beautiful damage done and dusted. Look at that, Godlike is still struggling a lot. Revenant, well, they are chasing them close. They are actually trying their level best to lead out some good shots, but now it's all about the next hard point. If the next hard point is in the favor of either team, the teams are going to win it, I believe so. Let's see what happens eventually. Godlike is gaining the points, 243, 44. Well, they are going to stop at that moment, and now the next hard point, I believe Godlike is already there. Yeah, Godlike is already got Revenant members. They are coming through as well. No one inside the hard point. God alone and Trunks inside the hard point. 4 seconds left. He's going to try to be the man to prevent anyone from pushing in. And with that being said, Godlike Esports closed this one off. Went down to the wire. Went very close. Godlike were probably not expecting the game to go that close. They were probably expecting to finish in P1 or P2. But Revenant Esports making a very strong hold, making a statement that they are not here to play, but they are here to win. And really well played by the team of Godlike. But a very valiant effort from the team of Revenant as well. Well, indeed, well, these are the few things the team Revenant and Godlike has to remember that this is the one match which can easily, let's say, give the space for them to incline a lot. But eventually, if Revenant fails to do so, or Godlike fails to get the best of five in their favor, I believe they're going to go out of the equation of the invitationals. So definitely, few things these guys have to be worried about is going to be there. But apart from that, when it comes to the being the MVP, Revenant's Abyss is the guy with 45 kills, and Death is going to be 40, and with a beautiful amount of assists as well, 17 to be precise. Yeah, Burns with 42 kills, but look at Learn, the IGL leading from front, 46 kills coming out of him. That is amazing. Crazy game coming out of him, almost a 50 bomb. Vegas with 36, Trunks with 39, Newton with 29 as well. Abyss 45 kills, Zyra with 26, Bones with 29, 31 for Master, and the last guy getting 29 kills as well. So really amazing game coming in from both sides, 238 to 250. A very close game, but yeah, Godlike with the map lead for now, 1-0 in favor of Team Godlike. Well, indeed, a beautiful game, a beautiful fight, a beautiful clash was delivered. And now moving up ahead, I guess the next thing that we have to be worried about is going to be at how the search and destroy is going to work out for these teams. Well, I believe the Ken game is going to be there for sure. Yeah, exactly. The second game is gonna start soon. It's gonna be the game of search and destroy. So really interesting to see what's gonna happen. And yeah, with that being said, we will be heading into the game very shortly. It's gonna be for to tie things up for Revenant Esports and to extend their lead. Godlike need to win this one, but if Revenant want to tie things up, they need to win this game of SND. Indeed, they have to do a beautiful job. Godlike is going to be on the red corner, and Search and Destroy is definitely going to be a little bit more high tech because it's a tactical game. Godlike loves to play with it, but Revenant, the current meta that they're actually trying to explore, that is actually on another level. So, all the best to both of these teams, particularly. Let's see what happens. Yeah, exactly. We just got to wait to find out when the game is gonna begin. I mean, lobbies hosted, players are ready, everyone is pretty much ready, and we're gonna start the game real soon. It's gonna be Yeah, Godlike let's versus start it. Revenant, Search and Destroy on standoff. We are ready, just waiting for the game to start. And with that being said, live action coming to you guys very shortly. Well, indeed, guys, I guess we have to give the call that the match has to be started. Eventually, when the match gets started, we are going to witness the carnage, the search and destroy. Definitely going to be an amazing map, no doubt on that. And amazing fights are going to be there. And after that, control is going to be there. But is it going to be control the end of the day?
or is it going to take to the fourth or fifth one as well? We have to check out. Yeah, exactly. Is it gonna be, or is it gonna be a 3-1? Is it gonna be a 3-2? Is it gonna be a 3-0? So yeah, let's see what's gonna happen. We are all set and ready. Production, we can start the game, and yeah, the game is ready to go. We have begin Godlike Burns versus I'm Godlike versus Revenant Esport. Yeah. A search and destroy and standoff. We saw Godlike winning this one yesterday. Can they repeat that today? Indeed. Well, definitely we have to check out that how the game is going to get converted. But like Learn, Burns, Neutrino, Trunks, Vega barely survived in the last hard point. What will happen in this one? I guess the contestant may go to the overtime as well. Yeah, there is chances of this going to the overtime, but yeah, match set, game ready. A minute and 50 left onto the clock. Godel on the offensive side first, and yeah, let's see what's gonna happen. Vegas, double windows for him right now. Burns with him as well. Revenant having mid map presence. Bomb. He's gonna throw. He's gonna chuck a grenade onto boxes, but he's not gonna find any success. Zyro with the DLQ-33. Revenant. Abyss, beautiful full catch one. Can he find the other? No. Learn with the trades. Learn not sniping using an AR this time around. Fair enough. Zyro gets Vegas. Trunks has one more guy in front of him. Now, can he peek at the right time and get the kill? Zyro gets Burns as well. So that is going to be huge. Bones gets Trunks. And with that being said, Turn is going to drop as well to the last guy. And 1-0 in the favor of Team Revenant. A brilliant start indeed from Revenant, but क्या वो अपनी स्टार्ट को वापस बना पाएंगे, वापस अपने पास में अपने रख पाएंगे, या फिर इस चीज़ को काउंटर करते हुए गॉडलाइक अपने अगले ही राउंड में यहाँ पे अपने जीतते हुए देखेंगे? वो देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है. Burns is the one who's going to plant the bomb, but is it going to be easy? Well, not at all. Apart from that, Vegas goes in for the shots, fails to connect. He's got the DLQ-33, but the shots are not getting connected. Neutrino finally bounces back in the game. Let's see how he's going to blow the bite. Oh, Burns gets taken down from Abyss. That's interesting. The bomb has been, I guess, drop down. Who is going to pick it up? Who is going to plant it? That's the question. Yeah, exactly. It's a 3v2 situation right now favoring the team of Revenant Esports, but now Learn makes it a 2v2 situation. No favor for any team. Bomb has not been picked up yet, so it is a 2v2 situation. Master and Zyro versus Learn and Trunks. That's what's gonna happen. Trunks has Zyro right in front of him, but he's not aware. Zyro is gonna try to push out from the tank. He might have heard the audio cues. Trunks still trying to figure out what to do. Zyro tags up Learn, backs off, and that's going to be the call for Trunks to probably move in, but Master's going to shut down Trunks, and with that being said, Revenant take the lead 2-0. Once again, Revenant is proving their worth. For Revenant is proving that they are here to actually win this one, back this home. But right now, let's see how much more of a gun game is left in that particular team. Apart from that, after this beautiful lead that Godlike has created, a 1-0 lead, to be honest, in the best of 5. It's not enough, but yes, definitely it's enough to actually give the pressure on Team Revenant. But Revenant is trying to tackle with it. Revenant is trying their level best to actually deal with the particular fights. But let's see how far they can actually go. Bones gets destroyed with that DLQ, and Lucas as well as being used by the other teams. Well, look at that. Master managed to take down Trunks. Team Revenant once again is appealing their attack, and they are actually having some good points in their favor. Apart from that, when it comes to Godlike, look at that. Vegas also gets connected. Neutrino shot comes in. One more guy gets taken now. That's interesting. Now it's a 2v2 type of situation coming up. Godlike, this could be the match where they are easily going to bounce back, or what is going to happen, guys? I mean, yeah, the timing was just unfortunate for Neutrino. He could have found that kill a little bit earlier. He's all alone, has his teammate to come back. Burns is going to come back, and now let's see what's going to happen. Burns shuts down Abyss. So that's going to be a nice little bit of assist coming in from his teammate. It's going to be a 2v1 situation now. Master, he has a good angle. He just needs to hold. He sees one, gets that kill. Beautifully done, and now all down to Neutrino. Neutrino's going to peek, misses out of that shot, but Master does not miss. And with that being said, 3-0 lead in the favor of Team Revenant Esports. Indeed, a beautiful one, no doubt on that. Revenant is just bagging back and forth, rounds and rounds in their favor. That's in Destroy. A beautiful map, a beautiful round, but it is Revenant who is reigning on top now. Got like that at this moment. But let's see what happens eventually after a 3-1 win. I guess this is the match which Godlike is scouting for as a revenge. But Burns gets taken down, Neutrino gets taken down, Lance gets taken down. It's all about the last two members surviving. Can they actually move forward? Yes, of course. Vegas finds a way, manages to put down Abyss, but how far he can go? Oh, Masa also gets taken out of Trunks' corner. Yeah, exactly. Trunks gets one more kill on his Zyro, so it is a 2v3 situation. 2v2 situation actually, so it is very clutchable right now, not really difficult. 2v2 situation. Bomb has been dropped, however, so they have to work towards the bomb as well, and Trunks and Vegas have Switchblade and a DLQ to work with. Let's see what's gonna happen. It's gonna be really interesting to watch. RNT and Godlike members above and below each other. Bones above Vegas. Bones is gonna jump down pretty soon, and Vegas just does not get the timing right, unfortunately. And with that being said,
They need to find the bomb. They need to find the bomb. They need to find the kills. Browns finds the first 1v2 situation. Indeed, a beautiful one, no doubt on that. But we have seen this 1v2 getting converted. And now, I guess the guys are not that same, but particularly Vegas, if I talk about this guy, oh, Oh, this on point spray, the on point shot to be precise, that was absolutely amazing. With this, the score is 3 versus 1. The target is of 7 rounds to win. Is it going to be the overtime? Is it going to be 6-6 coming up? Well, we don't know. But now, for now, as you all can see, slowly but surely, Godlike is back in the game. yeah, exactly. They've won the first round. They need to win another round in order to make sure that they are not that far behind when sides split. That Master getting that first pick onto Vegas, that's going to be key. Zyro's going to try to push forward. Burns and Neutral getting 2 kills as well. Advantage in the favor of team. A Godlike Esports now 4v3 situation. Zyro has a secondary to work with as well, if I'm not wrong. But yeah, has a Crick 6 to work with. Abyss finds Learn. Abyss finds Burns as well. And all of a sudden, Revenant have the driving seat. Indeed, they've got the manpower, but look at that. Zero gets taken down at the same exact moment. If it took Master and the other guy Abyss, let's see how they're going to perform. After the loss of Zyro, I guess the situations are looking a bit more, let's say, at an equalizing angle. But if talk about Godlike, well, they have to go ahead and fetch the bomb and eventually plant it out as well. On the other corner, Neutrino, the Beast managed to bag one. It's Master down to the knees. अब अगर बात करी जाए फिलहाल यहाँ पे आखिरी खिलाड़ी की तो टीम रेवेनेंट की तरफ से वो रहेंगे एबिस जो कि एक आखिरी उम्मीदवार है एक लास्ट होप है इस टीम के लिए पर्टिकुलरली देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है ट्रंक्स यहाँ पे बॉम्ब प्लान करने के लिए जाएंगे या फिर क्या सिचुएशन रहेगी वी हैव टू चेक आउट दैट एज वेल एबिस इज एक्चुअली ऑन द कॉर्नर वो चाह रहे हैं कि फिलहाल कहीं ना कहीं ए साइड को कवर करने की कोशिश करें लेकिन ए साइड से भी वो हट चुके हैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए देखेंगे ए साइड इज अ बेटर साइड एक्चुअली डील विद बट लुक एट दैट द स्पॉटेशन इज देयर ही टैग्स वन आउट ही गेट्स वन डाउन Neutrino also gets taken down. A beautiful 1v2 coming from his corner. Yeah, exactly. Abyss just does not miss those shots. Peaks, re-challenge, jiggles a little bit, and confirms those skill. What looked like a godlike round was converted into a Revenant round. And with that being said, 5 rounds are done. 4 favoring the team of Revenant, 1 favoring the team of Godlike. Final round before sides flip. Can Godlike win this one? Tough one to be precise for Godlike right now. If Godlike is going to let this go out of their hand, it's going to be a 1v1 situation in the leaderboard as well in the best of 5. So definitely there is something they have to actually work for. मूविंग अपार्ट अगर बात करी जाए एबिस की यही वो खिलाड़ी जिन्होंने पिछले मैच को कन्वर्ट किया अपने फेवर में और इस मैच में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है ज़ैरो की तरफ से भी कुछ अच्छे शॉट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है ज़ैरो ने भी अपना एवेंज जरूर से यहाँ पे किया पिछले मैच का जो खिलाड़ी था दिस कुड हैव बीन अ फ्री किल फॉर देम बट वेगस manages to back out from the scenario. Trunks manages to take one down. That's going to be Revenant to Zyro. This is a comeback type of moment. Revenant कोशिश कर रही है इस चीज को लेके. Vegas also gets destroyed. Now it's all about Trunks. A 1v3 has to be done. Is it going to be easy? Well, not at all. He's waiting for the right moment to strike on. Is it going to be an easy task? लग तो रहा है कि फिलहाल यहाँ पे कर सकते हैं. It's doable, but another need. But that's it. Yeah, exactly. And with that being said, Revenant Esports 5-1. They have the lead, they have the control. Going into offense, they just need to win 2 rounds, whereas Godlike Esports, they need to go and win 6 rounds. It's going to be really difficult. Even if they win 6 rounds, it's going to be very difficult because Revenant only needs 2 rounds. 2 compared to 6, a very difficult equation, a very difficult situation. But Vegas gets the first kill. That's going to open things up a little bit for Godlike. Now, can they keep the momentum going? Well, they have to try, otherwise things are slipping away from Team Godlike, and there we go. This is the exact thing that I'm actually feeling for. But Revenant Davis also gets taken down. Now it's a 3v3 situation coming up. Let's see how far they can actually go. Well, there we go. Some more shots are being delivered. Now the attacking formation has to be delivered. But Godlike, एक अच्छा अटैक, एक शानदार गन गेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है. मास्टर को पूरा कम्प्लीटली बैकआउट करना पड़ेगा. वही अगर बात करी जाए न्यूट्रिनो के तो टेक डाउन यहाँ पे कर दिया गया ऑलरेडी. यहाँ पे अब एक लास्ट खिलाड़ी देखने को मिलने वाले कुछ और स्टेज है इसी के साथ बर्न्स भी यहाँ पे एक और खिलाड़ी को टेक डाउन करते हुए देखेंगे. नाउ क्रिक 6 का जो अटैक है इनका काफी ऑन पॉइंट देखने को मिला. बट मास्टर की बात करी जाए वापिस आना चाहेंगे सीन में. उनके पास देखने को मिल रही है लोकस, अपने आप में कहने के काफी मेधावी गन, एक अच्छा शॉट जिस सिचुएशंस को आप कहने के काफी अच्छे तरीके से चेंज कर सकता है. बॉम्ब पिक करेंगे फटाफट जाके एंड जल्दी जल्दी अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करी जाएगी. लेट्स सी किस तरीके से गेम निकलता है. वेल डेफिनेटली पहले एरिया को स्काउट करेंगे rather than just मेकिंग अप अ हेस्टी डिसीजन. तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया स्काउट कर लिया पूरा का पूरा. जो बी साइड है वो ए साइड जो है वो एम्प्टी देखने को मिल रहा है. तो फटाफट से जाएंगे, बॉम्ब उठाइए, प्लांट करिए. इट विल बी एक्चुअली फेवरेबल फॉर दिस गाय. देयर वी गो, द प्लांटेशन हैज बीन डन. मूविंग अपार्ट, इफ आई टॉक अबाउट Buns, he's waiting, he's being patient. Master, can he survive with this attack? Well, you have to check. Yeah, exactly. And Master, he's trying to go back deep into spawn. I think he has planted
it for spawn. So yeah, he will have a line of sight when someone tries to go to defuse it. Beautiful plant coming in from Master and a beautiful jump shot. Wow. And 6-1, the team of Revenant well and truly in command over here, walking away with this round. I don't know what is happening to Godlike right now. This could have been the match where they can easily bag it out and they love to play the strategic tactical fight of this particular search and destroy. But yesterday as well, when Vitality did the same thing to them, they were unable to counter. And today also, the same thing is actually happening right now. I don't know what will happen. Will it be a straight back-to-back 5 rounds winning by Team Godlike and maybe giving us the overtime? देखना पड़ेगा गाइस, अभी तो लग नहीं रहा कि फिलहाल कुछ ऐसा हो पाएगा. काफी डिफिकल्ट लग रहा है समय मैचअप इनके लिए. गॉडलाइक की बात करी जाए, गॉडलाइक के खिलाड़ी न्यूट्रिनो अप डाउन हो चुके हैं. ट्रिंक्स की तरफ से एक सेपरेट देखने को मिला जरूर से है, बट इस समय रेवेनेंट के हाथ से ये मैच निकलता जा रहा है और लीजिए रेवेनेंट को यहाँ पे टेक डाउन करेंगे इसी के साथ 6-2 का स्कोर. दिस कुड बी द कमबैक मोमेंट, बट थोड़ा सा लेट जरूर हो चुका है. कहीं ना कहीं कहूंगा काफी ज्यादा लेट हो चुका है इस चीज को लेकर जो कमबैक वो देना चाह रहे हैं. ये मैच, ये राउंड जो है पर्टिकुलरली वो शायद इनके हाथ से निकल सकता है. या एग्जैक्टली निकल तो जरूर से सकता है, बट जितना नजदीक जाके निकले उतना बेहतर हो. ऐसा 7-2 हारना फॉर टीम लाइक Godlike, इट इज गोना बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम. मोरल थोड़ा डाउन हो जाएगा, बट on the other hand, Revenant just playing amazingly. This is why they're one of the better teams in India, I would say. This is why they need to be feared in India, I would say. This is why they are one of the top contenders as well. But yeah, with that being said, Godlike having a very easy round for them. Set up once again, it's a 1v3 situation. And I don't think Godlike will be struggling anymore. They will shut down the final guy. He's gonna try to rotate through below double windows. And he's gonna get caught off really soon by someone, or the time's just gonna run out. He has the bomb with him, has to plant sooner or later. But for now, Godlike Esports, they are well and truly in control of this round. वेल इंडीड अभी के लिए तो लग रहा है कि फिलहाल गॉडलाइक इजीली इस मैच को, इस राउंड को निकाल सकती है बहुत ही आसानी से. बट ट्रंक्स को टेक डाउन किया जाएगा. द सेम मोमेंट यहाँ पे एबिस की तरफ से एक शानदार क्रिक सिक्स का शॉट, बट फाइनली एबिस आल्सो गेट्स टेकन डाउन. नाउ वंस अगेन स्लोली बट स्टेडीली गॉडलाइक इज कैचिंग अप टू द गेम. रेवेनेंट के लिए दिक्कत वाली बात ये रहने वाली है कि फिलहाल ये मैच ओवर टाइम की तरफ जा सकता है. पॉसिबली देयर इज अ चांस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन टू हैपन. I mean, yes, exactly. Anything is possible at this point of time. God Vegas once again trying to find an angle onto someone, kind of an easy angle, but that's not gonna happen. Soon Burns finds one, escapes with his life, has someone present mid map as well. It's gonna be Abyss. Will Abyss spot him? That is the question. Does not spot him just yet. But yeah, the shots are gonna come down and he needs some cover fire from his teammates. But all of his teammates up and down as well, and a beautiful angle, but Vegas is just a little bit too late. Meanwhile, Neutrino finding 2 kills, so that is going to be huge. A guy's available statues as well, that is going to be Neutrino being a thorn in the back of Revenant right now, but Bones shut down Vegas. Learn gets the trade, so it is going to be a 2v1 situation. Zyro left all alone, and Learn's going to find the last kill as well. IGL turning up when he needed to, finding 2 kills in that round, and 6-4. Godlike well and truly back in this game. Back enough, but will it be possible for them to actually go for the overtime? देखने वाली बात यहाँ पे ये रहने वाली है कि अभी एक्सपेक्टेशन से परे हट के कहीं ना कहीं गॉडलाइक अगर अपना गेम निकाले तो वो काफी ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. नेश शोएबल सारी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और अपने चलते ट्रंक्स वेट कर रहे हैं. मौके का ट्रंक्स विल बी एबल टू टेक वन डाउन. बोन्स को भी डाउन किया, जायरो को भी डाउन किया. व्हाट इज दिस? यहाँ पे नजर हटी दुर्घटना घटती देखने को मिलने वाली है. आप देख सकते हैं मास्टर एबिस. अब यही 2 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हैं जहाँ पे अगर बात की जाए गॉडलाइक की, उनके पास 4 मैन पावर यहाँ पे देखने को मिलेगी. दैट्स एब्सोल्युटली ह्यूज कमिंग फ्रॉम टीम गॉडलाइक. Can they actually go ahead and back this one in their favor? That's the biggest question. Well, Neutrino की तरफ से एक और टेक डाउन, मास्टर को वहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा. And finally, it's all about Abyss, the last ray of hope for the team. Yeah, exactly. He's all left alone in a 1v4 situation. I don't think this is going to be possible. Neutrino's going to spot him. Neutrino's going to gun him down. And with that being said, 6-5. They're just getting back into this game. One more round and then we'll be heading into overtime. And Godlike just proving why they are the best team in India at this point of time. They're just playing really phenomenally. They're playing really well. Their comms are on point. They're making the comeback happen. Everything is happening pinpoint. The lineup for the game is that there. Smoke is there. I don't know why they're helping out of the smoke. They're kind of helping out their team, their opponents, I would say, rather than helping themselves out. But nonetheless, maybe a strat, making sure, trying to fake a mid push. But Revenant Esports finally finding the first pick. 2 people coming from back alley, Tom spots them, removes the machete, realizes, you know what, time to run. Learn finds one. Neutrino, can he find a couple people? Going for the wall bang will not be enough. It is going to be a 4v4 situation. Tries again, finds one, can he find a second? Gets a couple of shots off, up base. Waltz over the wall, survives for now. And indeed, they are surviving, moving apart. Let's see how much more they can actually pull through. अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली टीम रेवेनेंट की तो देख सकते हैं आप फिलहाल उनकी तरफ से स्विच प्लेट देखने को मिलने वाला है. एबिस की तरफ से ट्रंक्स को टेक डाउन किया जाएगा. गॉडलाइक फिर से यहाँ पे चिंता का विषय बनती दिख रही है. लर्न और न्यूट्रिनो 2 मात्र खिलाड़ी बचे हैं अभी.
Yes, exactly. Two players left, and Godlike in a must-win round. They cannot let this round go. Revenant, on the other hand, they have the bomb. The plant is gonna come in very soon by Abyss, and now the pressure is all gonna be on to Godlike. How do they make this rotation happen? Oh, Leon maybe missing out on an easy shot. Finally connects onto that, so turns it into a 2v2 situation. A beautiful, beautiful, beautiful game sense out coming out of Leon, waiting patiently, expecting the guy to plant the bomb and push out, and that's worked out. Neutron also being very patient. He's gonna spot one. Oh no, bad timing for the nade, I would say. But with that being said, he gets that kill. Learn finds his kill as well. And Godlike Esports tie things up 6-6. They go 5 rounds. They go 6 rounds in a row, I would say. No, 5 rounds in a row. Really amazing plays coming out of them, and they have tied things up. We are heading into overtime, going 5 rounds in a row. And now Revenant Esports are the one who are struggling. वेल द ओवर टाइम इज हियर. क्या गॉडलाइक यहाँ पे इस ओवर टाइम का फायदा उठा पाएगी या फिर ओवर टाइम का भी ओवर टाइम होता हुआ हमें दिखेगा. देखने वाली बात ये रहने वाली है. ओवर टाइम जब भी आता है कहीं ना कहीं एक अलग सस्पेंस बन जाता है कि अब क्या आगे क्या हो सकता है. फिलहाल यहाँ पे गॉडलाइक का जो कप्तान है वो तो ऑन पॉइंट देखने को मिला ही मिला है. अपार्ट फ्रॉम दैट रेवेनेंट की तरफ दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगी. गॉडलाइक ऑलरेडी एक अच्छी लीड के साथ यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 में मूव ऑन कर रही है. और उसके बाद अगर इस तरह का मैच यहाँ पे निकल के आता है तो गॉडलाइक के लिए ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे निकल के आएगी और कहीं ना कहीं रेवेनेंट के लिए चिंता का विषय बन सकता है. नेट्स को करके बढ़ाते हुए देखेंगे. एक और टेक डाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा जरूर से, बट फिलहाल तुरंत ही लीड यहाँ पे निकल के आ चुका है. कुछ अच्छे टेकडाउन्स के साथ ही गॉडलाइक फिर से अपनी जो पोजीशन है वो 7th राउंड के लिए, जो 7th विनिंग राउंड है उनका, उसके लिए सिक्योर करती हुई दिख रही है. बट अभी यहाँ पे जो 2v4 का सिचुएशन है वो ट्रबलसम हो सकता है. थिंग्स माइट एक्चुअली चेंज बिकॉज मास्टर यहाँ पे देखिए एक शॉट लेते हैं. डैमेज हल्का फुल्का जरूर दिया, लेकिन यहाँ पे इसी के साथ इसको टेकडाउन भी करते हुए दिखे. बोन्स की तरफ से यहाँ पे एक अच्छा खासा टेकडाउन देखने को मिलेगा, बट उससे पहले बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश. बट बिफोर दैट दे माइट गेट स्पॉटेड. लुक एट दैट, स्पॉटेशन इज डन. यहाँ पे ढूंढा लेकिन कोई फायदा नहीं. यहाँ पे बोन्स को टेकडाउन करते हुए दिखेंगे. एक अच्छा खासा मैं कहूंगा टारगेट सेट किया गया था. मास्टर की बात करी जाए, आखिरी उम्मीदवार बॉम्ब ऑलरेडी प्लांट हो चुका है. इज द ओनली गाय हु माइट एक्चुअली कम बैक इन द सीन. क्या वो पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी देखते हैं फिलहाल. बट लीजिए, लर्न को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फिलहाल वहां पे किस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं. जैसे के साथ टेकडाउन ऑलरेडी कर दिया गया है. बॉम्ब डिफ्यूज कर पाना काफी मुश्किल रहेगा मास्टर के लिए, बट वो कोशिश जरूर से कर रहे हैं. Yeah, कोशिश जरूर से कर रहे. He is trying his best, but it's a 2v1 situation and he has to defuse the bomb. 17 seconds are left on the clock. At this point, I'm Godlike can just play time. Vegas is gonna get spotted and Vegas is gonna turn and he burns Master and Godlike goes 6 freaking rounds in a row. What an amazing game coming out of these guys. They are not out of this tournament just yet. 6 rounds back to back. That's crazy in itself. And Godlike Esports somehow they're gonna try to pull this one right. That side they're gonna flip. They are gonna be on the defensive now. Can they close this one off? आई गेस यहाँ पे कोशिश तो करेगी जरूर से गॉडलाइक, बिकॉज देखिए अभी ओवर टाइम पे दोबारा जाने से उनके पास एक जो अच्छा खासा मौका मिल चुका है वो उनके यहाँ से छिन जाएगा. रेवेनेंट के एबिस की बात करी जाए, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं. अभी तक कोई इनिशियल पिक निकल के नहीं आ पाया, बट लर्न की बात करी जाए स्पेसिफिकली, ही नोज दैट यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो प्रेजेंट है. और लीजिए इसी के साथ इनिशियल पिक ऑलरेडी निकल के आ चुका है. एक अच्छा खासा इनिशियल ओपनिंग यहाँ पे दे दी गई है. उसी के साथ दो खिलाड़ी को यहाँ पे किंग रेवेनेंट के डाउन किया जाएगा. तीसरे भी यहाँ पे वाइप आउट हो सकते हैं बहुत जल्द. अब देख सकते हैं वॉल बैंग करने की कोशिश, लेकिन उससे पहले ही उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा. कोई खास यहाँ पे रिजल्ट निकल के नहीं आ पा रहा है. रेवेनेंट के बोन्स आखिरी उम्मीदवार स्पॉट होते हुए दिखे. 1v1 की कोशिश यहाँ पे देखने को मिलने वाली है. कुछ अच्छे स्पेस, कुछ अच्छे अटैकिंग फॉर्मेशन निकल के आएगी, बट बोन्स गेट्स टेकन डाउन. विद दिस Godlike backs the another one out of the equation. 8 versus 6 यहाँ पे देखने को मिला. और इसी के साथ सचिन डिस्ट्रॉय एंड होता हुआ दिखेगा. BO3 में से 2-0 का स्कोर निकल के आ चुका है. BO5 में से टू बी ऑनेस्ट तो एक और मैच, एक और कंट्रोल का अगर ये मोड जीत जाती है Godlike, that could be it. Yeah, exactly. And 7 rounds in a row. Godlike Esports, what have you done? Revenant coming up with the biggest choke of this tournament, maybe. They have been choking. They did choke against top as well. And I don't know what's happening. Godlike Esports just too good. Revenant Esports struggling and struggling big time. Godlike Esports, however, they have managed to put 2-0 and they are going to advance with another map win. They just need to win control now and it will be 3-0. Revenant Esports, you need to wake up, man. You need to wake up. This could be it for team Revenant Esports. अगर वो अगले मैच को यहाँ पे जीत नहीं पाए तो वहाँ पे इनके लिए सिचुएशंस खराब हो जाएगी. बट मूविंग अहेड, चलिए अभी वेट रहेगा मैं फिलहाल अपने अगले मैच के स्टार्ट होने का, बिकॉज वो रहेगा कंट्रोल का और काफी एंटिसिपेटेड है. ये एक ऐसा मैच रहेगा ना गाइस, देखिए बेस्ट ऑफ 5 में से जो मे भी इस पूरे पूरे टूर्नामेंट को यहीं पे रोक देगा या फिर एक नई उम्मीद जरूर से यहाँ पे देगा टीम रेवेनेंट को. तो क्या यहाँ पे होने वाला है, विल चेक इनटू दैट. This tournament is about to start. The fight is about to start soon enough. And remember, guys, this is going to be control in the map of takeoff. Godlike is going to spawn in the red location, or should I say, the Guerrilla squad is going to be Godlike, and the special forces are going to be team known as Revenant. But everybody's ready right now. Let's see how the fights are going to pick up, how the
aggression is going to get developed at this moment. You can see that we have got Lon, Burn, Neutrino, Trunks, Bakers fighting for the team Godlike. A huge comeback of an era was actually delivered from the corner. Yesterday they lost to if I'm not wrong, team Vitality with a score of 7-0. But right now, look at the comeback. 7 straight rounds in their favor. Yeah, I mean, at this point of time, they are very strong. They went 7 rounds in a row. Now they're gonna go into the game of control. They're just looking very strong, and they are no one can stop them. I think at this point of time, amazing games coming out of them. They've been patient. They have that winning potential. Godlike Esports, they are looking really strong right now. They made the comeback happen in Hardpoint as well. They were down, they were getting down, but they stuck up. They showed up, and they were able to close off Hardpoint. They were down pretty bad in SND. They made a comeback, going 7 rounds in a row. Crazy games out of them. Well, what a beautiful game, no doubt on that. But Control is another beautiful map where the things can actually go south for Team Revenant Esports, or it can be actually happening for Team Godlike as well. But now the lobby is here. Revenant Abyss, Master Zyro, Bones are going to perform for the Team Revenant. When it comes to Godlike, it's going to be Lon, Bones, Neutrino, Trunks, and Vegas. Everybody is trying their level best to outperform each other. But right now, the contestment is absolutely amazing. आपको याद होगा guys, हार्ड पॉइंट में 238 पॉइंट यानी कि सिर्फ 12 पॉइंट से आ रही थी रेवेनेंट, और अभी अगर बात करी जाए सचिन मिश्रा वहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट से हारी है टीम रेवेनेंट. बट ये जो एक टसल है, ये जो कांटे की टक्कर है, वो ये चीज़ दिखा रहा है बहुत क्लियरली दैट दोनों ही टीम अपने आप में बेस्ट है. I mean, exactly. This is showing what's gonna happen. But Revenant Esports right now with the lives advantage 28 to 25, they are looking very strong. They have the control onto the sides as well. Godlike Esports, they are deep in their spawns. They have been denied entry to any point, but Godlike, they're trying to somehow capture the B point first and then maybe focus on to the A point. Zyro getting a few picks in middle as well. Trunks trying to find the guy inside of hospital, or he will not spot anyone. Finally spots the guy, comes in with a few shots. He's gonna win that fight. Master comes in with the trace. Other 20 to 20 now. Godlike, they are getting the kills back in their favor, but they just need to get the kills advantage, like the lives advantage right now. Trunks is gonna get pushed, Abyss gets shot, Abyss is gonna be patient, Abyss is gonna get shut down, and now Trunks, can he find Zyro, peeks, takes a couple of shots, backs off, reloads, sets inside of the point, trying to get a couple of progress done. Revenant back in B. Godlike need to get some points done, some progress done as well. well, कोशिश जारी है यहाँ पे. देखिए गॉडलाइक की तरफ से प्रोग्रेस बनाने की, और देख सकते हैं आप इस समय ट्रंक्स की स्पेसिफिकली बात करी जाए, उनके स्विच ब्लेड काफी कारगर तरीके से काम करती हुई दिखेगी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमिनेशंस की मात्रा भी घटती जा रही है फ्रॉम टीम रेफरेंस कॉर्नर. एंड अभी फिर से यहाँ पे एक हाइड आउट क्रिएट करने की कोशिश, बट स्पॉट हुए ट्रंक्स इसी के साथ टेक डाउन होते दिखे. वहीं अगर बात करी जाए रेफरेंट के प्लेयर्स की, उनको भी यहाँ पे सेम तकलीफें फील होती हुई दिखेंगी, बट साथ ही साथ सही मौके की जो एक वेट है वो देखने को मिलने वाली है. बंस को स्पॉट किया, उन्हें टेक डाउन करते हुए देखेंगे. 10-9 का जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिल रहा है. ए साइड को कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है बाय टीम गॉडलाइक. उनको कैप्चर करना है किसी भी तरीके से, कोशिश जारी है. 8-8 के एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है. देखिए ए साइड और बी साइड दोनों पे यहाँ पे कब्जा जमाने की कोशिश करी जा रही है, बट साथ ही साथ अब एलिमिनेशन की मात्रा को यहाँ पे देखिए रेफरेंट के लिए काफी कम हो चुकी है. रेफरेंट खिलाड़ी एक एक करके डाउन होते जा रहे हैं, फिनिश होते जा रहे हैं. बट वहीं अगर गॉडलाइक की बात करी जाए, उनके पास भी सेम फेट देखने को मिल रहा है. उनकी तरफ से भी कुछ लॉसेस काफी भारी देखने को मिल रहे हैं. उनका पहला राउंड ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है. बट रेवेनेंट की बात करी जाए, लुक एट दोस गाइस, लुक एट दोस पीपल, दे आर नॉट स्टॉपिंग. बोन्स और ज़ायरो वहां पे देखने को मिलने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ, और 2-2 का स्कोर, और इसी के साथ बोन्स से काफी उम्मीद देखने को मिलेगी. टाइम हाथ से निकलता जा रहा है, और इसी के साथ गॉडलाइक फिर से वापस आ चुकी है सीन के अंदर. द गोरिल्ला स्क्वाड, द गॉडलाइक्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द वे दे नीडेड टू. एंड इसी के साथ कंट्रोल में 3 राउंड जीतने हैं, 1 राउंड ऑलरेडी गॉडलाइक के नाम हो चुका है. I mean, Godlike Esports, they are playing really well right now. They were down in the lives department, but they made a huge comeback. बहुत अच्छे से अपना आप को कंपोज रखा, काम रखा, got the kills and shield of the round. Did not capture even one objective out. So a minute and 30 was all they needed to find all those kills out. Vegas 20 and 29 now, so no one really having any sort of advantages. Bones is going to get spotted, Bones is going to get shot, Abyss is going to get cleared out. Revenant Esports, even though they are looking very strong in the start, they started to struggle in the end, and Godlike Esports, even though struggle in the start, they finish off really strong. Godlike trying to find anyone inside the point. He's gonna spot Zyro, he's gonna shut down Zyro. Neutral got spotted. 50G has comes out, but only finds hit markers over there, not a kill. Trunks, he's gonna try to push center. He's gonna find a couple of kills. He spots one to his left. That's gonna be easy pickings. Finds one. Can he find the second? Pushing from right. Yes, he does. Can he find the third? He's gonna go for the kill. Unfortunately, not able to complete that, but Neutron is there. Back his teammates up. Burns gets one as well, and Godlike have the advantage in the lives department. Neutron trying to get him off angle. He's gonna spot one. Can he win the fight? Yes, he does. Beautifully done. Now heading into the enemy spawn. Gets killed. Gets stayed out. Claw has been removed. Kills coming through. Trunks
2 kills for him as well. Switchblade being Well, used. yeah. I guess this is something I have to be worried about because operator skills that were banned were Purifier and Claw, but right now this guy Master is actually using the Claw. I don't know what will happen and how the rules are going to play with it, but eventually at this moment, as you can see, Revenant is not being that kind of, let's say, consistent at this moment. Godlike is reigning on top. आप देख सकते हैं Godlike की तरफ से जो points है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. A point को capture करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करी जाएगी, but apart from that, look at the pressure that Godlike is making on team Revenant. Revenant is just running around like they have to actually come back. Definitely they have to come back, no doubt on that. But Godlike के ऊपर जो यहाँ पे कैप्चर है वो सेट करने की कोशिश रह रही है. ए साइड ऑलरेडी यहाँ पे लूज होने वाली है. Godlike के लिए चिंता का विषय बन सकता है, बट साथ ही साथ एलिमिनेशंस की बात करी जाए, ये कैप्चर हो चुका है. एलिमिनेशंस के मामले में Godlike इस समय कम देखने को मिल रही है. Oh yes, with that beautiful anchor shot was absolutely on point. But अभी एलिमिनेशंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है. I mean, 6-3 situation for Godlike. Things are starting to get difficult, and Revenant Esports might just get this out. Underkiller drone gets destroyed, Master finds Strung, so it's a 6v2 situation now. And that being said, 1v6 situation coming up for Vegas. Vegas left all alone, and I don't think he can really do anything. Claw used Zarur se Wada, so Godlike can contest that if they lose this. So yeah, anyways, Godlike Esports are going to lose that round. But with that being said, Revenant tie things up 1-1. Well, indeed, a beautiful fight, no doubt on that. But moving up ahead, let's see how the third round is going to wind up. Third round, it's gonna start very soon, and Revenant Bones, he's gonna try to push in from the right hand side. He's gonna try to find a couple of early kills with the grenade as well. Godlike holding back, Annihilator being used with the first shot, trying to reset, but Zyro's nade is gonna shut down. Need to know Vegas gets Master, Burns gets one guy as well. Bones trying to push forward, he's gonna get spotted, he's gonna get shot. Reach positions, gets that kill, gets a beautiful headshot. Master gets kills as well. He's gonna try and find the guy who was weak, gets that kill, 27-23. Godlike struggling. The struggle is for real for team Godlike. As you all can see, Godlike के लिए यहाँ पे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं. तो आप बात करी जाए इस समय ट्रंक्स की, देखते हैं किस तरीके से अपने गेम को वापस अपॉल यहाँ पे करते हैं. आप देखिए शॉट्स लिए गए फिर से 25-19 का जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिल रहा है. 18 का देखने को मिल रहा है. 17 यहाँ पे देखिए गिरते ही जा रहे हैं Godlike के खिलाड़ी. I don't know what's happening right now, but Godlike is facing a real tragedy at this moment. और Revenant की तरफ से काफी on point देखने को मिल रहा है. I mean, 35 seconds left on the clock, and Revenant Esports, they're looking very strong. They are double in the lives department. Godlike struggling at this point of time, and Revenant Esports have the control. They have their operator skills, but I don't think now is their nice time to use it. Maybe save with them for the next round. Maybe go for a couple of kills here and there first, and then think about using your operators, because you don't have a lot of time. Only 17 seconds left to work with. Finally, your first rifle should be getting an objective cap, and that is what Godlike Esports have started to do. And Burn getting those 3 kills, that is going to be huge. As is Underkiller drone to work with, but as soon as he goes to use it, he gets trade off, gets celebrated. Claw being used by Master once again. Not sure what's happening, and yeah, I don't know how all of this is going to play out in the end. And with that being said, 11-5, Godlike struggling. Vegas pulls out his DLQ-33, 9-5 situation right now. A flag almost being capped. 7v5 situation, 7v4 situation now. Godlike Esports inside that one. Burns missing, Burns connects. 5v4 situation. Godlike can clutch this one. 4v4 situation. Burns did not need to miss that. Vegas finds one as well. So it's going to be a 4v3 situation. Let's see what's going to happen. Even if Revenant wins, the win is going to be in the favor of Team Godlike. So these are the few things that they have to be pretty much vigilant about. But moving up ahead, it's a 1v3 situation. Is it going to be possible? Goes in for the fray, but fails to do so. Fails to connect this phase. Now moving up ahead, special forces are making their way up, but using that claw is the only thing which may stop them from winning this whole event for today. I mean, it can very well be possible, and if they get DQ'd, which means Godlike Esports will win 3-0. But nonetheless, I think that Revenant are putting up a good fight. With that being said, Godel Burns has removed the I-Tech AMR, trying to find a couple of easy kills. Finds one, can he find the second? Yes, he does. Beautifully done by Burns, has the 50 GS out. Using that to find a couple of kills as well, and Godlike right now with the 1 life advantage, Burns gets shades out, and the life advantage neutralized for now. Revenant Zyro trying to push in from the left side. Newton and Learn finding a couple of kills. Vegas finds the kills as well. Abyss gets a kill as well. With that being said, 23-24. No team having a clear advantage at this point of time.
इंडीड अभी के लिए एडवांटेज तो किसी भी टीम के पास देखने को नहीं मिल रहा, बट वहीं अगर लीड की बात करी जाए तो रेवेनेंट के फेवर में जरूर से देखने को मिल रही है समय लीड, बिकॉज देखिए उस समय उनके पास 2 राउंड उनके फेवर में आ चुके हैं, एक और राउंड उनको जीतना है किसी भी तरीके से, वो एक राउंड इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बंस की बात करी जाए, वो अपनी राइट के एमआर लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू हंट विद, बट कुछ खास वहां पे कम निकल के नहीं आ पा रहा है। टीम गॉडलाइक बार बार यहाँ पे देखिए अपने पॉइंट को लूज करती दिख रही है, विच इज नॉट अ ग्रेट साइड। उनके स्प्रेज ही यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए एस्टॉनिशिंग है टू बी ऑनेस्ट, बट दैट्स हाउ द गेम इज कमिंग अप फॉर देम। Godlike once again is losing a lot of blood. आप देख सकते हैं 21-12 यहाँ पे जो स्कोर है बहुत गलत जा रहा है फॉर टीम Godlike, बट Godlike क्या कमबैक दे पाएगी, दैट्स $1 million क्वेश्चन फॉर नाउ। या 19:9, 10 लाइफ्स का डिफरेंस, 10 लाइफ्स का एडवांटेज है, मैं बोलूंगा। किल्स लेने की कोशिश जरूर से कर रहे हैं, बट आई थिंक बहुत देर हो गए। 18-5 सिचुएशन हो गया, एंड आई डोंट थिंक द टीम ऑफ गॉड लाइक विल कम बैक from your easy win for Team Revenant Esports, and they will tie things up 2-2 in control. आई गेस 2-2 नहीं होगा, वो फिलहाल 3-1 ही हो जाएगा, उसके बाद रेवेनेंट इस मैच को जीत जाएगी इजीली अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बट यस ऑफ कोर्स आई गेस वी आर मूविंग अप टू इट। एक आखिरी खिलाड़ी, ट्रंक से एक आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलने वाले हैं। द लोन मैन वुल्फ ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम इज गोना बी देयर, एंड लुक एट दैट, आई बिलीव इट्स नॉट गोना बी दैट इजी फॉर हिम टू सर्वाइव। आप देख सकते हैं एक और शॉट, एक और टेक डाउन यहाँ पे काफी ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्प्रेज आते दिखे, बट कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ रेवेनेंट कंट्रोल को अपने नाम करते हुए दिखेगी। वो क्लॉक का जो इस्तेमाल था उसके बारे में क्या ओपिनियन रहता है उसके बारे में भी हम चेकआउट करेंगे, बट डेफिनेटली if something else is going to happen, I guess Revenant के लिए जो एक straight comeback था काफी important था। Yes, the comeback was needed, and Vitality ने भी कंट्रोल से ही कमबैक शुरू किया था, एंड रेवेनेंट ने भी वही किया है। अगर मैं कहूँ तो सेम स्कोर लाइन था, आई गेस 3-1 या 3-2 था, आई एम नॉट श्योर, बट वी हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन ऑन द यूसेज ऑफ क्लॉ, वेटिंग कि क्या अपडेट आएगा मैनेजमेंट से, एंड वी विल अपडेट यू गाइस। बट Abyss 26 kills, Zyro 26 kills, Bones 23, Master 22, and the last guy getting 20 kills as well. Burns with 26, Trunks with 22, Lord with 21, Neutral with 50, and Vegas with 15 kills as well. Moving forward, it was a game which Revenant needed to win, do what I situation with Evo. Really needed to come out on top, and they did come out on top, but is it gonna be enough? That is the question, because agar kuch results आए तो maybe Revenant will be disqualified, and I think yes, that's what happened. Revenant has been disqualified. Godlike Esports have moved up into the brackets, if I'm not wrong. So Claw banned tha, and Revenant Esports used Claw, so they will, I think, be disqualified, and Godlike Esports win this one 3-0. We will show you guys the updated brackets as well, and Godlike Esports will be moving forward, and Revenant Esports have been disqualified for as much as I know. But nonetheless, a valiant effort coming in from the side of Godlike Esports to win this one as well. But Revenant, they were really dominating in the final few halves, and they really made it all work out and ended things really well. I think we are ready to move towards the points tables, I mean the brackets, so we can show you guys who has qualified where and who has gone where. And with that being said, Revenant Esports has been disqualified. Godlike have left the lobby. Revenant have left the lobby. Godlike Esports winning 3-0. But yeah, let's move on and let's check the brackets really soon. It's gonna be finals for tomorrow. It's gonna be Team Vitality versus IFM Esports in the upper brackets. The lower brackets is gonna be T2P Infective versus Godlike Esports, and Team Top versus NS Official. So 3 matches tomorrow, guys. 3 interesting matches, 3 amazing matches gonna be coming your way. And with that being said, over on to Raider. Well, indeed, a beautiful one, no doubt in that. But after this particular matchup, after this BO5, Godlike is going to move on to the next stage. Apart from that, when it comes to the prize pool, let's talk about the prize pool as well once again. Well, we have the prize pool of 1 lakh Codm points. Rank 1 will get you 30,000 CP. Rank 2 will get you 20,000 CP. Rank 3 and 4 will get you 12,000 CP each. From rank 5 to rank 8, we are going to get you 6,000 CP, and the MVP of this whole scenario is going to get 2,000 CP as well. So definitely a win-win situation for everyone at this moment. And apart from that, guys, you guys are here for the giveaway of 15 legendary Lamba or Messi bundle, 5 each on the platform. Well, if we talk about YouTube, you have to be actively engaging in these chats. And today's giveaway winner have already been announced, if I'm not wrong. Apart from that, guys, this is going to be it for today. Anything to add on, Elvir? No, with that being said, guys, it's been a pleasure, amazing day. But tomorrow's going to be way more exciting, because obviously I'm not going to be there tomorrow, but Raider
Luck to you, man. And guys, see you tomorrow and see you very soon.